In the continuity of festivity, today we are going to celebrate our MNITJAA Foundation Day. So to start with, after welcoming you all, I humbly request our chairman MNITJAA, respected Professor P.N. Padi sir, to please come on the stage, and I request respected Purohit boss to felicitate, to welcome our chairman sir with saplings. On the dais, please. Last one. शादी करना टाइम बचेगा ये होगा चटनी Now I request respected Dr. K.L. Gupta boss to come on the dais, please, and I request respected President MNITJAA to welcome him on the dais. Respected President boss. Now I request Engineer Devraj Solanki boss, our President MNITJAA, to have a seat on the dais, please. Respected President boss. Now I request respected Professor R.K. Jain, Dean Alumni Affairs, to come on the stage and have a seat, please. I request our Vice President, respected Tribhuvan Singh Ranawat boss, to welcome him with a sapling. Now I request the convener of today's program, respected Sri Tribhuvan Singh Ranawat boss, the Vice President of MNITJAA, have a seat on the dais, please. Respected Tribhuvan Singh Ranawat boss. Now, to start with the addresses, I request respected Dr. K.C. Gupta boss to address all of us, being our senior most alumnus, respected Dr. K.C. Gupta ji. गुड इवनिंग टू एवरीबडी और सब बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये मौका दिया मेरे विचार शेयर करने का. तो इज इट ओके इफ आई स्पीक इन इंग्लिश? ओके, so I've got limited time and I generally prefer interactive session. I study in IIM Ahmedabad, case method, class participation. So I've got some agenda what I want to share, but before that I want to know from all of you what would you like me to talk about, and I've got only 5 minutes. Okay, college ki journey. Okay, so
the MREC, Malviya Regional Engineering College, was started in 1963. But my association with Malviya Regional Engineering College goes even earlier than 1963. I mean, this is a mistake. So, because when MREC was started in Gandhinagar, they used a workshop of the Podar Multipurpose Higher Secondary School, where I studied my 9th, 10th and 11th. And there is a technical mission from British. They established the workshop, and that time ours was the only batch in 11th higher secondary. Two streams were there, one for going further education in engineering like I have come, and another was for preparing technicians, foundry, carpenter, etc., etc. So those laboratories are very good, and I have used that 4 years before MREC started, and they were afterwards when we moved here. They were used for Polytechnic, Jaipur Polytechnic, and I don't know whether they are still there. So that is one. Number two, my relationship with MREC is also even before MREC started, because I did my first year of engineering from MBM Engineering College, now MBM University, in 1962-63. And then 63-64 I was in second year, and Professor B.G. Garde, who was the principal of the MBM Engineering College, he was here, and he remained here from 8th September 1963 to 24th of March 1967 as a principal, and afterwards Professor R.M. Advani was there, who also came from MBM Engineering College. So because I was born and brought up in Jaipur, so I dropped 1 year to join MR. I met Professor Garde that I want to join second year again. So he said, you apply and all those things, procedure, and so I got it. So 1 year I lost, doesn't matter. Like that, first batch was mostly from the Birla bits, Pilani they studied, but some of us, about 4 or 5, they came from Jodhpur. That time there were only 2 engineering colleges in Rajasthan. Okay, and also, this would be interesting to know that when we were in the 3rd or 4th year, IIM Ahmedabad, Professor Gupta came for selling IIM Ahmedabad to talk about what is MBA, what is IIM Ahmedabad, and what is the education. And in engineering, you would all know, I don't know, now slide 10 may be there. That time our education was engineering, mathematics. We never knew anything about social sciences, what is psychology, what is sociology, what is all those things. So when Professor Gupta told me all those things, I heard, and my horizon was broadened. Oh wow, I must join that. So I applied in 68, but I could not get, I was waiting in Calcutta, but our one, Naval Singh Chaudhary, our batchmate, he got admission in 68 and he passed out in 70. I again tried, because I don't leave up, when I decide to do something, I do it. It may take a long time. So 69 I joined and I got MBA, and in fact, that time after 71 MBA I wanted to do PhD, but I had no money. I studied on loan scholarship. I had no money to send postage. So in 2013, I studied here PhD one semester, 2008, and in 2013 I got from University North Texas. 30 years, 40 years after MBA. Anyway, so I want to share some documents which I have got of MREC, which are historical importance, heritage. And I want them to show you and preserve, and I want you to digitize and all that preserve. So, okay, I've got 2 annual reports, first annual report and second annual report of the MREC. They are in depleted condition, so I don't want to open and show to destroy them, but I'm offering, to the director and others that they may digitize that. And I have to check, because it is heirloom, so I have to check with my family also whether they want to present or they want to keep. That decision family will take. I live in a democratic family and I've given them all the rights. Generally my family decides most of the things. Okay. नहीं वो time नहीं मिला. I am a researcher. I am currently I have got a CDRI fellowship. I am associated with कॉलेज की बात कर रहा हूँ. नहीं, कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ मैं.
फेलोशिप CDRI यहीं कर रहा हूँ मैं, और $10,000 I got from the MNIT. ओके क्या? अरे वो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी सर. ओके, I also okay, I have also got original cyclostyle, लिस्ट ऑफ द, उस टाइम जमाने में साइक्लोस्टाइल चलते थे ना, ये ओरिजिनल लिस्ट है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, 69 साइक्लोस्टाइल लिस्ट है. और ये फोटोकॉपी, एक फोटोकॉपी तो मैं अभी दे देता हूँ, ये तो लेकिन ये भी प्रिजर्व कर रखी है मैंने. और आई वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ मैगजीन प्रतिबिंब. So this was so I got extra copy. So I got one extra copy for presenting to the director and the dean. And there is one more. Then afterwards it was graduated to better version. So this is also there. And these are the originals. So and also annual day celebrations were there. 65, 66. So this is extra copy I am doing. And or 67 also I got, but there I don't have any extra copy. So maybe it could be digitized or copied later. So so do I have some more time to talk, or my time is over? so okay. So yeah, one more minute. I want to share what I learned here. I was a captain, and first year and second, third year I was captain of swimming. And during student there was a Jaipur District Swimming Association which was defunct. I organized that, and I organized Jaipur District Swimming Competition. Currently, as on today, I am India's second fastest 100-meter best of swimmer in my age group 75 to 79. Also, I was captain of the chess when I was 67, 78. So this year I went to Chennai, where a chess Olympiad was there. In the same venue, there was not Indian team, but there was a curtain leisure tournament, same hotel, 4 pointed by Saturn, same pieces, same everything. I stayed there and I played chess also, 4, 5. Now, in between I have been continuing swimming, but chess only last 5 tournaments I have played in last 3-4 months. So, what we learned here for students also, it is a golden opportunity. You should learn and, continue your passion. Thank you. I think my 1 minute is over. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं यहीं है, मैं आई एम मैं आता रहता हूँ, और कभी भी आई एम अवेलेबल. आई विल कम एंड इफ आई कुड डू. माय फील्ड इज आई एम डिसास्टर रिसर्चर. तो मैं सबसे पहले अपनी जान बचाता हूँ, फिर औरों की बचाता हूँ. Thank you, respected Dr. K.C. Gupta Bose, for your address, and the institute will definitely be benefited with the documents which you have provided. Now, I request our next speaker, respected Engineer Ashok Kumar Purohit Bose, the founder member of our Alumni Association, for his address, please. Respected Purohit Bose. He has 10 minutes. गौरवशाली गरिमामय मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मेरे साथी मालवीयंस, इस संस्था के डायरेक्टर, हमारे चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी MNITJAA, ए मेंबर एंड ऑनरेबल ऑन द डायस, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम अपनी संस्था की बात करेंगे. 68 में पहला बैच निकला, अब बैच चल रहा है, हम सबको पता है. हम लोग छिंतर में इस कॉलेज से पास आउट हुए. समय कुछ ठीक था, नौकरियां मिल गई, उम्र कम थी, शादी नहीं हुई, थोड़ा बहुत पैसा जेब में था, समय बहुत था. कॉलेज की याद बहुत सताती थी. तो लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ,
उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे कुछ साथी हम मिले, मैं, राजेंद्र अग्रवाल, राकेश भाट, किसी के बाप नहीं आ पाए हैं। कुछ किस्मत के संयोग जब है ना, जब हम किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो कायनात का जर्रा जर्रा भी हमारी मदद करता है। तो हमारे ऑफिस भी कुछ नजदीक नजदीक हो गए, घर पास पास थे, एक ही कॉलोनी में, एक ही चौकड़ी कहते हैं जयपुर में। कॉलेज में बैठना शुरू हुआ, ऑफिस में बैठना शुरू हुआ, अभी कॉलेज निकलता हूँ, ऑफिस में बैठना शुरू हुआ, घर पे बैठना शुरू हुआ। एक परिकल्पना ने हमारे दिमाग में जन्म लिया, वो बताता हूँ आपको कहाँ से ये हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज की एलिमिनेशन चली। नाउ स्टार्ट माय फॉर्मल एड्रेस। साथियों, आज का दिन उस सपने को साकार होने का है जो हम लोगों ने आज से 45 साल पहले उस युवावस्था में देखा, जब लोग कुछ और सपने देखा करते थे। ये वो दिन है जो आज हमारी आत्मा को तृप्त कर रहा है। ये वो दिन है जो इस कॉलेज के इस गौरवशाली इतिहास में एक और गौरवशाली शाम बनने वाली है। 76 में पास किया, फिर बैठे सोचे कैसे करें। टेलीफोन लग्जरी, स्कूटर बहुत बड़ी बात, साइकिल अवेलेबल, मोबाइल पेजर ये तो कुछ बात ही नहीं थी। शायद इन बच्चों से जब मैं कुछ कहूँगा ना तो उनको लगेगा बॉस क्या बात कर रहे हैं। एनीवे हम चारों बैठे, बातचीत शुरू हुई, कैसे करें, क्या नहीं करें, एंड वी हैड ए रूपरेखा, हमारी एक रूपरेखा बनी। और फिर हमने सोचा कि हम एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाते हैं। उम्र 22-23 साल, प्रभाव रखा बहुत तेज, नाम रखा यंग इंजीनियर सोसाइटी। बुद्धि नहीं थी कि कॉलेज के नाम से जोड़ें, यंग इंजीनियर सोसाइटी, इन शॉर्ट यस। ध्येय वाक्य, द मोरल डायलॉग, से यस स्मॉल YES to capital YES. That was our motto. Whenever we go to anybody, whatever we do, you have to say yes. That's how we start. फीस 2 रुपए का फॉर्म, 10 रुपए एक फंक्शन में लेते थे, है ना। और उसके लिए साइकिल से घर घर जाते थे। शायद महामना मालवीय जी की आत्मा का कुछ आशीर्वाद हमें मिला हो। तो जैसे उन्होंने काशी विश्वविद्यालय बनाया ना, हमने इस कॉलेज के एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाना शुरू किया। और ये करते करते फिर जब एक बात आ गई, बाद में हमसे बहुत लोग जुड़े। मैं अगर कोई नाम भूल जाऊं तो प्लीज कोई बुरा नहीं माने। इसमें आज SC सोनी साहब मिले, इंजीनियर SR गोलानी मिले, यतीश गौड़ साहब मिले, VN करोड़िया मिला, DK जैन मिला, हेमंत जोशी मिला, प्रमोद सरीन मिला, प्रदीप माथुर मिला, अखिलेश जैन मिला, और आने वाले समय में फिर हमें अशोक अग्रवाल जी मिले इसी वंदना। साथियों, 25 अगस्त 1977 को द फर्स्ट एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ दिस कॉलेज वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड एंड दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट आवर फाउंडेशन डे टुडे। वी वेलकम। I will show you some documents because the previous background has been like that. This is the first souvenir. A copy of all this I have already given to Registrar Office. When the last election of Solingen of that took, they had no reference of those membership. I have given all my set to them. Still I have some spare copies with me. This is the first Alumni Association's photographs. This is the first souvenir that we published in 1978, followed by that in 79, followed by that in 1983, followed by that in 1984, followed by that, and then we had sufficient members, so we came out the first directory of the Alumni Association. This is here. This is here. एक और बात याद आ गई, अभी जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें आदरणीय मोदी जी ने प्रथम वेला पे ये कहा, जो मंत्र हमें 5 दिए, उसमें एक मंत्र दिया, विरासत को लौटो, विरासत का संरक्षण करो। जैसा इस कॉलेज का हमेशा सौभाग्य रहा है, यहाँ चाहे स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोफेसर हो, एवरीबॉडी इज एक्सीलेंट। आई टेल यू, हमने तो 6 महीने पहले डिसीजन ले लिया इसका कि हमें विरासत पे चलना है। जब हमारा गोल्डन बैच का था 25 दिसंबर में,
उसके आसपास ही ये निर्णय हो गया था कि हम फाउंडेशन डे मनाएंगे। हम मोदी जी की परिकल्पना को शायद देश में पहली बार अक्षर से और कर्तव्य से और काम इन डीड्स एंड वर्ड्स दैट आई से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मैं नॉर्मली एक्सटेम्पोरी बोलता हूँ। नहीं ना, वो जा ठीक रहेगा। कोई पॉइंट्स रह जाते आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। हमने स्टार्ट कर लिया, अब क्या करें? अब शुरू किया होली मिलन सम्मेलन, दिवाली मिलन सम्मेलन, 25 अगस्त को फाउंडेशन डे, एनुअल डे जो मैंने आपको मैगजीन दिखाई, और न्यू ईयर नए साल का जो हम 31 दिसंबर को नहीं मनाते थे, सब नौकरियां करते थे, सबके घर भी थे, होता था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, 31 को मार्च, ठीक है ना। हाँ आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दैट थिंग्स ना। और अब जो मैं बोलूंगा आपको लगा बड़ा अजीब सी बात, अगर मैं ये कहूं कि उस 2 रुपये और 10 रुपये में हमने रामबाग पैलेस और जयसिंह पैलेस में हमारी फंक्शंस किए, इट विल बी अ सरप्राइज टू यू। बच्चों को लगेगा पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। उस वक्त ये उपलब्धि बहुत बड़ी होती है। हमारे 68 बैच के लोग बैठे हुए, सीनियर्स बैठे हुए, ये लोग थोड़े से अच्छी पोजीशन में थे, ये उस समय भी अच्छी पोजीशन थोड़े बहुत। हमको कोई 100 रुपये अटैचमेंट 100 रुपये का, उस बॉस के दम 7 दिन तक गुनगाते थे क्या रासो 100 रुपये का हमको अटैचमेंट मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो नाम जो उस समय प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी रहे 1977-78 जो हमारा फाउंडिंग बैच था, इन लोगों जैसी इच्छा थी। आई वॉज अ फाउंडर प्रेसिडेंट, आर.के. अग्रवाल वॉज अ जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट ईयर वी मेड एम.एल. सेठ, इज नो मोर, नाउ वी लॉस्ट हिम, वो हमारे थोड़े सीनियर थे, उनको बनाया। आर.के. भट्ट साहब एज जनरल सेक्रेटरी, देन आर.के. अग्रवाल साहब एज द प्रेसिडेंट, और सी.के. बाफना जी आए नहीं, वो जनरल सेक्रेटरी बने हुआ था। देन अगेन आई वॉज द प्रेसिडेंट, देन भट्ट सेक्रेटरी, देन अग्रवाल प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी। उस समय हम ऐसे ही बनाते थे क्योंकि हम ही लोग हुआ करते थे। फिर बाफना साहब प्रेसिडेंट, अग्रवाल साहब सेक्रेटरी, फिर बंसाली साहब। फर्स्ट बैच 1968 फर्स्ट बैच पास आउट टू मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, H.C. बंसाली साहब, अनफॉर्चुनेटली इज आल्सो नो मोर, और आर.के. भट्ट साहब सेक्रेटरी। फिर सोनी साहब फर्स्ट आई थिंक ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज हु गॉट इनटू JDA, रिटायर्ड एज डायरेक्टर इंजीनियरिंग, एंड D.K. Sharma is here, he was general secretary. And again S.C. Soni Saab was the president and I was general secretary. This is how these things are documented. This all has been documented in the magazine of the college for the 2006 when MNITJAA mega was functioning. I will tell you how it became mega and then MNITJAA. I am going to cover that. This has been documented there and it is there, that article I have brought. अब ये फंक्शंस कर लिए, ये कर लिए, कुछ मेंबर्स भी बन गए, डायरेक्टर भी बन गए, कुछ हमारी भी उम्र बड़ी हो गई, तो समझ में आया कि यक्स क्या होता है। यंग सोसाइटी तो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज रख सकता है, अपना डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, अपने अल्मा मैटर से नहीं जुड़े अभी तक। देन केम द एग्जिस्टेंस एंड द स्टार्टिंग, द मेगा's name was converted to मालविया MREC इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, MEGA, Malviya Engineering Graduate Alumni. And then see again, this was like that, but it came out to mega. Mega मतलब विशाल, बड़ा. This all blessings to this college, I tell you ना. हम सब लोगों ने इतनी मेहनत की है और इतनी हमको ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतनी एक्सीलेंस इस कॉलेज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये मेगा हमने 1998 में शुरू। उसकी अगर मैं बात करूंगा तो विश्वास जैन साहब, कालरा साहब बैठे हुए हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दी मेगा, है ना। फिर सरदाना साहब आए नहीं फर्स्ट बैच के, और उदाव साहब, ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स थे जिनको हमें साथ मिला। अशोक अग्रवाल जी यहाँ बैठे हुए 81 में पास आउट हुए, तब से हमारे साथ जुड़े, और यश में भी और मेघा में भी बहुमुखी काम इन्होंने किए हैं। मतलब कॉलेज से जुड़ना है, अशोक को बोल दो, वहाँ डीन में बात करनी है, अशोक को बोल दो, एकेडमिक मैगजीन छापनी है, अशोक को बोल दो, ये काम करना है, अशोक को बोल दो। ये फर्स्ट बैकबोन फर्स्ट। अनदर मैन वाज अशोक खंडेलवाल, इज नॉट हियर, 79 बैच, एंड आई पुट ऑन रिकॉर्ड द अप्रिशिएशन फॉर अशोक अग्रवाल। जब हमने एलिमिनेशन कॉलेज संस्था के सदस्यों में थे विश्वास जैन,
कालरा साहब, आर के अग्रवाल जी, एस के कालरा साहब, सी के बापना जी, राकेश भट्ट, अशोक पुरोहित, वीरेंद्र करोड़िया, जी एन गोयल, अखिलेश जैन, गोपाल मेहता, अशोक अग्रवाल जी, बी एल रावत, के सी शर्मा, ए बी गुप्ता, लाइक दैट। तो 98 वी स्टार्टेड मेगा। ये सारे फंक्शंस हम करते थे। जो सेक्रेटरी बनता उसका घर ऑफिस होता था। कोई बिल्डिंग हमारे पास नहीं थी, कोई जगह हमारे पास पैसे खरीदने को भी नहीं थी। 2000 में 1 और 2 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, उदाव साहब प्रेसिडेंट थे, हमने बापू नगर में एक 900 स्क्वायर फुट का बेसमेंट खरीदा। दैट बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियल ऑफिस ऑफ मेगा, जिसमें 1 लाख रुपए अभी बैठे नहीं भाटिया साहब ने दिए, बाकी किशोर सराबी ने उसका बहुत ज़्यादा डेकोरेशन किया। देन केम पांडे साहब, वो हमारे चेयरमैन थे साहब। उनसे जब हमने बातचीत की, लेटर इज अवेलेबल विथ मी, ऐसे पांडे, हाँ नाम अशोक अग्रवाल साहब, क्योंकि पीछे है ना साहब, ये छोड़ते नहीं किसी लाइन को। हम तो इंजीनियरिंग थे तो पांडे बोले काम चला लेते थे। दिस इज द लेटर आई हैव विथ मी, रिटन टू देम। सर हम 20 साल से ये कॉलेज के फंक्शंस कर रहे हैं, जो कॉलेज को करने चाहिए थे वो हम कर रहे हैं, जगह हमारे पास नहीं है। उन्होंने जो हमारे ज़माने में प्रैक्टर ऑफिस होता था, केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी, वो 2 कमरे हमें दिए। पहले एक दूंगा, फिर दूसरा दूंगा, तुम 3 महीने में करके दिखाओ क्या करते हो। यहाँ विद इन 1.5 मंथ हमने सारा रिनोवेट किया, एसी लगाई, कार्टेन लगाए, पर्दे लगा दिए, फॉल सीलिंग करके उनसे इनोग्रेट करा दिया। दैट स्टोन इज ऑलरेडी दिया। और मेगा के जो भी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बड़े, वो भी वहाँ लिखे हुए हैं, कब इनोग्रल हुआ वो भी लिखा हुआ है। फ्रॉम देयर वी एंटर्ड द कॉलेज। हम अपने घर में घुसे। तब तक हम जैसे महाराणा प्रताप के साथ भील घुमा करते थे ना, वैसे हम गाड़ियां लोहारी से घुमा करते थे। ये आया हुआ एग्जैक्ट हिंदी है। तो तब से मेगा इस कॉलेज में आई। और मेगा के टाइम से कौन कौन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहे वो भी बताता हूँ आपको, जब 2 मिनट टाइम में। कालरा साहब वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मेगा, अग्रवाल साहब फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, सेकंड प्रेसिडेंट आर के उदावत साहब, सब लोग 68 बैच के हैं, फर्स्ट बैच के। मैं जनरल सेक्रेटरी, एम के सरदाना साहब प्रेसिडेंट, वी के करोड़िया सेक्रेटरी, कालरा साहब, उदावत साहब, सरदाना साहब फर्स्ट बैच ऑफ दिस कॉलेज। देन डी सी कटारा साहब वो 71 बैच के थे, उनके साथ भट्ट साहब बने, फिर बापना साहब जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद के सारे नाम वहाँ कॉलेज में लिखे हुए हैं, वो मुझे बोलने के कोई ऐसी खास अवसर नहीं। अब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मेंबर बन गए, मेगा बन गई, जिसका नाम मेगा हो गया। थोड़े और आगे बढ़े, यहाँ एमई शुरू हो गई, मैनेजमेंट कोर्सेज शुरू हो गए। फैकल्टीज में भी कुछ लोग कॉलेज के नहीं थे, तो स्टूडेंट जैसे पंडित साहब बैठे हुए हैं, दिलीप शर्मा साहब बैठे, हमारे कॉलेज के पढ़े हुए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, मेंबर थे। उन लोगों ने हमें अप्रोच किया कि हम एल्यूमिनी क्यों नहीं है, हम यहाँ फैकल्टी हैं, हम पढ़ा रहे हैं, या ये MBA कोर्स चल गया। देन अगेन वी स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम IIT Delhi and all that, and there the name was changed to MNITJAA, wherein not only the engineering graduates, the postgraduates, the persons who have studied anything else from us, the faculty, and perhaps I think the staff also, so they became the member. Friends, this is the journey from yes to mega to MNITJAA. I'll just take one more minute. We had so many chapters running at that time also. Bangalore chapter, Kota chapter, Delhi chapter, Calcutta chapter. We have all those. Bangalore, this is all on record with me. In the magazine for 2011-12, a photo gallery has been made. Here is a photo gallery, which starts from yes, goes to mega in subsequent pages, and then goes to MNIT. All these are documented already in the magazines of 2006, 2011, 2012. With that, we came to today. Now, speaking about today, I extremely extend my thanks to Solanki and Yadav to take this one work which we could not. In fact, we should have celebrated Falun Day. We were celebrating it, but वो गाड़ियाँ लोहार या वो वाली स्थिति में, कभी इस गार्डन में, कभी उस गार्डन में, कभी राजपुरा, कभी वहाँ मेहरू पैलेस में, कभी राजपुताना में, कभी जयसिंह पैलेस पे, कभी किसी के पर्सनल हाउस पे। और हमारे भाटिया साहब ने 3 साल तक हमारी जो कैंट वो थी पिकनिक, उसको वेन्यू भी दिया और मीनू भी। बट ऑल दिस वाज स्कैटर्ड। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इन आवर ओन हाउस वी आर सेलिब्रेटिंग द फाउंडेशन। थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू बोथ।
पादी साहब, ये कॉलेज शुरू से इतना लकी रहा है, इतना एक्सीलेंट के बच्चे मिले हैं कि हमने जब फंक्शंस करते थे कल्चर प्रोग्राम, तो हमारा डिसीजन था हम किसी प्रोफेशनल को नहीं बुलाएंगे, प्रोफेशनल को नहीं बुलाएंगे, वो तो एज ए चीफ गेस्ट। हाँ, वो अशोक ठीक करा, एज ए चीफ गेस्ट। अब एक बार हमने बुला लिया मंत्री जी को, आधे घंटे 1 घंटे आए नहीं। हाँ जी ना, हमने निर्णय ले लिया कि आज के बाद नो मोर पॉलिटिकल चीफ गेस्ट, इट्स आवर ओन प्रोफेसर who will be chief guest. It's our own director, on our BOG's member, somebody like that, but no more politician chief guest. Coming to culture program, we took a decision. No more, anybody was not there who is professional. हमारे खुद के पास आउट वो बच्चे, या हमारे रेस्पेक्टेड भाभी जी, या हम खुद जो कभी स्टेज पे गए नहीं, सा और ता में फर्क समझते नहीं, ताल क्या होता है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा जानते नहीं, एक एक महीने हम प्रैक्टिस करवाते थे, कोरियोग्राफर रखा हुआ था, 100 बच्चे उस प्रैक्टिस में आते थे, उनके पेरेंट्स आते। वो जो ब्रदरहुड आई, वो जो कनेक्शन बना, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इवन टुडे। इतने अच्छे म्यूजिशियंस हमारे यहाँ, इतने अच्छे डांसर्स हमको यहाँ मिले, इतने अच्छे परफॉर्मर मिले अपनी कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में, पास आउट के रूप में, या फैमिली मेंबर्स के रूप में, कि हमारे प्रोग्राम्स को पेपर्स ने टॉप पे देखे, कहा दिस इज ऑफ द इंटरनेशनल रेप्यूट, अगेन ऑन रिकॉर्ड दैट कटिंग इज देयर व्हेन इट वाज टोल्ड। जो बिरला ऑडिटोरियम में 2001 में हमने फंक्शन किया था कि सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट का प्रोग्राम किया मालवा इंजीनियरिंग कॉलेज में विद द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, आवर ओन फैमिली मेंबर। बट साहब, एक वो हमारे जो कोरियोग्राफर थी, वो रीमा गोयल, दे गॉट ऑल इंटरनेशनल फिल्म्स, उनसे हमने सीखा मेहनत। ये इस कॉलेज का बीज है बच्चों, आप लोग समझ लो, हम किसी से कम नहीं है, मेहनत में कमी मत छोड़ो। आई थिंक माय टाइम इज ओवर। So thank you so very much for giving me this pleasure. Thank you, respected Ashok Kumar Purohit boss. Now, next, I call upon the stage the second founder member, respected Sri Rajendra Kumar Agarwal boss. My humble request, your time is maximum 5 minutes, please. रेस्पेक्टेड डायस, हालांकि पुरोहित साहब ने पूरी बातें बतला दी है हमारे जर्नी के बारे में, और मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। कुछ जो यादें मेरी है, क्योंकि मैंने और बापना जी ने MES ज्वाइन किया था, और हमें 8 से लेकर 2 बजे तक की हमारी ड्यूटी थी। तो 2 बजे के बाद का टाइम 76 में हमने पास आउट किया, और 76 में ही MES ज्वाइन कर लिया, और हम दोनों साथ ही एक ही कमरे में बैठते थे। तो 2 बजे के बाद का टाइम हमें यूटिलाइज करना। तो वो जो टाइम हमें मिला, वो इस जो एसोसिएशन अभी हम देख रहे हैं, इसका फाउंडेशन का कारण बना। वो मैं आपको बात बतलाता हूँ। और क्योंकि MES यहाँ बनीपाक में ही था, हमारा चीफ इंजीनियर ऑफिस, और मेरा घर भी बनीपाक में ही था, तो जब हमने यस का फाउंडेशन किया, यस की मतलब थॉट दिया कि यस बनना चाहिए, तो उसके लिए हमने सहायता ली। हमारे कैप्टन थे मिस्टर दत्ता, उनसे हमने जो इसका जो मोनोग्राम है वो प्लान करवाया। उसकी कॉपी भी मेरे पास में, उन्होंने हाथ से जो मोनोग्राम बनाया था यस का, वो कॉपी मेरे पास है। तो एक तो वो चीज़ मैं आपको बतलाना चाह रहा था। और उसके बाद में 10 साल तक, 86 तक मेरे घर पे मैंने जो एलमनाई का ऑफिस रन किया बनीपाक में, और कंटिन्यूएशन में जो हमने प्रोग्रामिंग किए, वो अभी जैसे पुरोहित साहब ने बताया, 4 प्रोग्राम हमने फिक्स किए कि हम होली, दीपावली और फाउंडेशन डे जो 25 अगस्त था। अगस्त हमने इसलिए रखा, एक तो कॉलेज का भी फाउंडेशन डे बताया अभी सरदाना साहब ने कि कॉलेज का भी फाउंडेशन डे 25 अगस्त ही था,
चांस की बात है। और हमें क्योंकि वो पीरियड 25 अगस्त का ऐसा होता था कि एग्जाम भी हो चुके होते थे और नया सेशन भी नहीं होता था, तो वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट टाइम था, तो वो डेट हमने वो फिक्स करी और चारों फंक्शन हमने 2 रुपए फीस रख के लोगों से कलेक्ट करके, पुरोहित साहब ने बताया साइकिल से जाके और कैसे भी करके और किसी से 100 रुपए लेते। और जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने जब 25 अगस्त का किया था तो हमने 100 जनों की बुकिंग की, यदि मेरी याददाश्त सही है, और हमें सिर्फ 10 जनों ने हमें कंफर्मेशन दिया कि हम आएंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम करते हैं, पैसा हमारे पास था नहीं। तो एक तो वो चीज बताना, दूसरी हमने प्रयास करते रहे। फिर ये जो मैगजीन छपने वाली बात है वो भी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैगजीन छापने के क्या पहले वो हाथ से छपती थी मैगजीन, एक एक वो लगा के, और पैसा हमारे पास होता नहीं था। तो बनीपाग में एक कोई प्रिंटर था, भट्ट साहब आपको तो पता है तो वो प्रिंटर हम दे देते उसको, भाई लाके कि भाई ये करना है तुमको, प्रिंट करना है, पैसे हमारे पास होते नहीं थे। तो जब भी उसके पास जाते तो महीने भर तक वो जो महीने भर तक चक्कर देता रहता, सर आप ही का काम हो रहा है, आप ही का काम हो रहा है और वो लास्ट डे तक जब 25 तारीख आती ना, तब जाके ये 79 का ये जो मैंने अभी कलेक्शन आपको दिया है, 78 में फर्स्ट हमने जो या जो मुश्किल से कोई 15 पेज का हो, क्योंकि हमने कहा मिनिमम खर्चे में हमें ये देना। तो एक चीज ये मैं आपको बता, दूसरा बैनर की बात बताना चाह रहा था। एक बैनर हमने 2x4 का, क्योंकि पैसे होते नहीं थे, तो साटन के कपड़े पे हमने एक बैनर बना रखा था यस का, और सर उस बैनर को हमने 8 साल तक चलाया। चारों फंक्शन में हम वो बैनर लगाते थे, और नीचे जैसे होली फंक्शन होता था तो यहाँ होली फंक्शन, और दीपावली का है उसका, दीपावली का तो दीपावली लिखते थे और न्यू ईयर का था न्यू ईयर लिखते थे, और उसको हटा देते थे और वापस समेट के रख देते। और उस तो ये क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ये संस्मरण आपको कि आज जो 30,000 लोग हम हो गए हैं, उस टाइम हमारा विजन, और हम जो 4-5 जने थे सबके पास 230 रुपए बेसिक में हमने ज्वाइन की थी हमारी सर्विस, और कुछ पैसा जो भी होता था वो इसमें लगा देते थे। तो वो बैनर हमने काम में लिया। वो 2-3 चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तीसरा, हमने 2 रुपए फीस रखी, वो तो आपको सबको बतलाई दी। फिर क्या हुआ कि जब 86 में हमारे जो सब लोग थे ये स्प्लिट हो गए, बेसिकली सबके पोस्टिंग्स अलग अलग हो गई, हम एक्शन हो गए, तो इस वजह से वो काम बंद हो गया। उसके बाद में 92 में जाके, नहीं 92 में मैंने विश्वास में हमने ये प्रोग्रामिंग किया। पहले हमने 2 रुपए फीस रखी थी, फिर 500 रुपए फीस रखी थी, 500 रुपए लाइफ मेंबरशिप रखी थी। तो विश्वास के ऑफिस में हमने जो मीटिंग्स करना चालू किया, और फिर अल्टीमेटली ये डिसीजन हुआ कि जो अपन इसको मेगा बनाए। तो अपने माथुर साहब के घर पे इसका इंसेप्शन हुआ था, यदि ध्यान हो तो आपको। तो माथुर साहब के यहाँ पर जब मीटिंग थी तो हमने ये मेगा बनाया, और मेगा बनाने के बाद में थोड़ा पैसा आया, तब जब हमने 1000 रुपये इसकी फीस मतलब रखी, और ये डिसीजन किया कि जो 1000 रुपये हम कलेक्ट करेंगे उसको किसी भी कंडीशन पे खर्च नहीं करेंगे, और इवन उसके ब्याज को भी हमने खर्च नहीं किया, मेरे ख्याल से अभी तक भी नहीं किया। तो वो जो फिक्स अमाउंट हमने किया वो आज जो हमको इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है, मेरे ख्याल से ये जो हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं। और इसके अलावा बीच बीच में, क्योंकि मैं तो सेंटर ऑफ रहा हूँ और हमेशा जुड़ा रहा हूँ, मतलब 76 से लेके अब तक कंटिन्यूशन में जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारी बीच बीच में प्रॉब्लम्स हुई, कभी लड़ाई झगड़े भी हुए हमारे यहाँ, हमें जो इलेक्शंस के बारे में भी हुए, तो सभी में मैं सेंटर पर पॉइंट रहा और हम उसका सॉल्यूशन निकालते गए, और आज हम इस स्टेज पे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने चैप्टर्स अभी बने हैं, हमको तो देख के इतनी खुशी होती है। हमने मतलब 20 जनों से स्टार्ट करके आज 30,000 लोग हैं, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि हमको देख के जितनी खुशी हो रही होगी और किसी को नहीं हो पा रही है। तो थैंक यू, और मेरे को मौका दिया बोलने का, और हम सब जुड़े रहें, यही मेरी कामना है। थैंक यू।
Thank you, respected Sri R.K. Agarwal. Sorry. Now, I request respected Professor Ashok Agarwal Bose to address us, share us your memories of Alumni Association. Your time limit is 3 minutes maximum, please. बुलाते ही नहीं, 3 ही मिनट दिए तो नहीं, वैसे मैं ज़्यादा नहीं दूँगा। मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जयपुर और मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के पूर्व विद्यार्थियों की संस्था, जिसे वर्तमान में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर अलुमनी एसोसिएशन, शॉर्ट में MNITJAA बोलते हैं, इसके स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं संस्थान के निदेशक, हमारे परिवार के मुखिया प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी पादी साहब का, इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री देवराज सोलंकी जी का, वर्तमान महासचिव राकेश कुमार यादव जी का, वर्तमान उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह राणावत जी का, और मेरे अग्रज जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में मैंने लगभग 40 साल काम किया, उनमें बैठे हुए हैं प्रथम बैच के माननीय श्री सुरेंद्र कुमार कालरा जी, माननीय डॉक्टर श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, माननीय राकेश भट्ट जी, माननीय अशोक कुमार पुरोहित जी, और उनके साथ श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी, जिनके साथ मैंने 1980 के दशक के प्रारंभ में, जब सुरेश चंद्र जी सोनी साहब इस संस्था के अध्यक्ष थे, उनके साथ लंबे समय तक काम किया। मैं आप सभी का वर्तमान में जो संस्थान के चंद संकाय सदस्य हैं उपस्थित हैं, दिलीप कुमार शर्मा जी, उपेंद्र पंडेल जी, नंद कुमार जी, और कुछ विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, कृष्णा जी भी हैं हमारे सहयोगी, आप सभी का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे को नई चीज़ कुछ नहीं बोलनी, केवल 2 या 3 विशिष्ट चीज़ें जो मुझसे स्वयं से संबंधित है, उसके बारे में मैं केवल 2 मिनट लूँगा और अपनी वाणी को विराम देकर अपना स्थान ग्रहण करूँगा। पहली बात तो यह है कि मैं 1976 से लेकर और आज 2022 हो गया, लगभग 46 साल हो गए, 5वां दशक पूरे होने की लगभग कगार पे है। शायद मैं एक इकलौता ऐसा सदस्य हूँ, शायद, वैसे तो मैं निश्चित हूँ, लेकिन मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर कोई गलती हो तो मेरे पर उसका पाप ना चढ़े। मैं इकलौता ऐसा सदस्य हूँ जो दोनों संस्थानों से 46 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, वर्ष 1976 से लेकर आज 2022 तक। और मेरे को पूर्ण विश्वास है और आशा है कि अगले 4 वर्ष और 2026 तक मैं इसके साथ सक्रिय तौर पर जुड़ा रहूँगा, और शायद इस तरह का पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने 50 साल लगातार न केवल संस्था की सेवा करने का जिसको सौभाग्य मिला हो, वरन संस्थान की सेवा करने का सौभाग्य भी जिसको मिला हो। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने, हमारे वरिष्ठों ने, हमारे अग्रजों ने, जो कि जिनको हम बॉस बोलते हैं इस संस्थान की भाषा में, उन्होंने इस संस्था को प्रारंभ किया और बहुत ही संघर्षपूर्ण यात्रा इसकी रही, सुखद भी रही, कुछ अनुभूतियाँ दुखद भी रहीं, खट्टी मीठी अनुभूतियाँ रही, लेकिन बहुत संघर्षपूर्ण इस संस्था का जीवन काल रहा है 1977 से लेकर और अगले 2-3 दशकों तक। जो मेरी छोटी मोटी उपलब्धि रही, उनमें एक उपलब्धि तो ये है कि मैं लगातार 46 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अगले 4 साल जुड़ा रहूँगा, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। 2 उपलब्धियाँ जो रही वो ये रही, वो मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, पूरी संस्था की उपलब्धि है, और उसमें संस्थान के निदेशक महोदय, संस्थान के शासी परिषद के अध्यक्ष महोदय और संस्थान के प्रशासन का भी पूरा सहयोग उसमें रहा। पहली उपलब्धि तो ये रही
कि जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि हमारा कोई कार्यालय नहीं था। हमारी बैठक कभी किसी होटल में होती थी, कभी किसी बाग बगीचे में होती थी, कभी किसी घर में होती थी, और हम जो है यायावर की तरह जो है घूमते फिरते रहते थे। लगभग 15-20 वर्षों तक हमने लगातार प्रयास किया कि संस्थान हमको इस संस्थान परिसर के अंदर केवल एक कमरा दे दे, 8x8 का, 8x10 का, 10x12 का, जिससे कि हम अपना कार्यालय यहाँ चला सकें। और अनेक प्रभावशाली लोगों की लगातार प्रयासों के बाद भी हम इसमें पूर्णतः असफल रहे। लेकिन हमारा सौभाग्य था कि 21वीं सदी के प्रारंभ में हमको एक ऐसा शासी परिषद का अध्यक्ष मिला, प्रोफेसर HC पांडे उनका नाम था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनका प्रिय था, मैं उनका विश्वास पात्र था। हमने उनके माध्यम से प्रयास किया और पहली बार 2 दशकों के लगातार संघर्ष के बाद इस संस्थान परिसर के अंदर हमको इस संस्था का कार्यालय के लिए हमको एक कक्ष आवंटित किया गया। 20 वर्षों के संघर्ष के बाद एक उपलब्धि तो हमारी ये रही, मेरी नहीं, हमारी ये रही। और दूसरी ये रही कि 2007-8 में इस संस्था का एक संविधान जो है शासी परिषद द्वारा पारित किया गया और उसके अनुसार 1000 रुपये जो आजीवन सदस्यता थी वो प्रथम वर्ष में जब विद्यार्थी प्रवेश लेता था उस समय उसके शुल्क के माध्यम से ही ले ली जाती थी। तो दूसरा हमने प्रयास ये किया कि जो विद्यार्थी यहाँ से अपना 4 साल का स्नातक कार्यक्रम या 2 साल का अधिक स्नातक कार्यक्रम पूरा करके जा रहा है, उसकी वो 1000 रुपये की आजीवन सदस्यता शुल्क, जो कि MNITJAA की आजीवन सदस्यता शुल्क है, वो MNITJAA के खाते में स्थानांतरित की जाए। लेकिन कोई भी निदेशक इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। उस समय फिर HC पांडे साहब से हमने अनुरोध किया और शायद पहली बार 2009 या 2010 के आसपास 4 या 5 जो बैचेस थे उनकी आजीवन सदस्यता जो है हमारे MNITJAA के अकाउंट में ट्रांसफर की। केवल ये हमारी 2 प्रमुख उपलब्धियां रही जिसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहता था। मेरा निर्देशक महोदय से केवल एक अनुरोध है कि इस संस्थान, मैं भी इस संस्थान का एक पूर्व विद्यार्थी रहा हूँ। आप भी विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के, मैं भी विद्युत अभियांत्रिकी विभाग का हूँ, और मेरी प्रतिष्ठा जो है संस्थान से बाहर पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया भर में सैकड़ों हजारों पूर्व विद्यार्थी ऐसे हैं जिनसे आप मेरे चरित्र के बारे में, मेरी निष्ठा के बारे में, मेरी कार्यशैली के बारे में आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मेरी आपसे केवल एक अनुरोध है कि आप इस संस्थान के जो पूर्व विद्यार्थी हैं उन पर विश्वास रखें, उन पर विश्वास रखें, और एक बार विश्वास करके उनको कोई जिम्मेदारी दें, उनको कोई काम दें, और उसके बाद देखें कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो एक तो हमारे जो पूर्व विद्यार्थी हैं वो आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो शीर्ष पद पर आज विराजमान है। तो इस संस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हम चाहते हैं कि इस संस्थान का भविष्य भी गौरवशाली रहे, और उसकी बागडोर इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों के हाथ में होने के साथ साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के प्रशासन और संस्थान की शासी परिषद पर भी है। तो केवल हमारी इस संस्थान की गरिमा का ध्यान रखें, हम पे विश्वास रखें और इस संस्थान को निरंतर आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ ठोस कार्य कर सके। उसमें हमारा जो भी सहयोग जितना भी जब भी संभव हो सकेगा हम अपनी आहुति देने को संपूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर अशोक अग्रवाल बोस। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे एक और वरिष्ठ एलुमनाई और इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र पंडेल बोस, फॉर्मर चीफ वार्डन, जिन्होंने एसोसिएशन को इंस्टीट्यूट के लिए कुछ काम करने के लिए चलाकर प्रेरित किया और हम उनके मार्गदर्शन में हॉस्टल में विद्यार्थियों के लिए कुछ कर पाए। आदरणीय उपेंद्र पंडेल। बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा। आदरणीय सम्माननीय हमारे संस्थान के निदेशक महोदय,
मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी, मेरे आदरणीय अग्रज, मेरे साथी, मेरे प्रिय अनुज और डियर स्टूडेंट्स, मैं 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा। जब MREC में मैंने एंटर किया था 1978 में, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे महावीर स्कूल से। आज का टाइम नहीं है कि आप टीचर से कभी बात कर लें। हमारी रैगिंग होती थी, बॉस रैगिंग लेके आते थे, हमें ही नहीं पता रैगिंग किसने दी, क्योंकि ऊपर देखना अलाउड ही नहीं था। आँख से मिलाने की बहुत बड़ी बात है। 3 महीने तक हमें कैंटीन, लाइब्रेरी और शॉर्टकट्स भी अलाउड नहीं थे। मेन रोड से आना पड़ता था, एक सफ़ेद यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी। बहुत बड़ा डिसिप्लिन था और मुझे लगता है उसके वजह से आज हम डिसिप्लिन है। पहले सोचते तो ऐसा है, लेकिन जब आज इस माहौल में देखते हैं, तो जब मैं यहाँ पढ़ने आया था तो बड़ा सा MREC का ऐसा नाम था, यू वॉन्ट बिलीव, हमने IIT का नाम ही नहीं सुना था। हमारे टॉपर्स भी IIT में नहीं जाते थे 11th के बेसिस पे। MREC, MBM, बिट्स पिलानी, 2-4 REC का और नाम थे। जब हमें पढ़ने आए तो हिंदी मीडियम में हमने पढ़ा चाल, त्वरण, गति, ऐसा। यहाँ पे पढ़ाने लग रहे एक्सेलरेशन, दिन में रैगिंग हो, टीचर एक्सेलरेशन पढ़ाए। तो 2-3 महीने तक रैगिंग हुई तो ऐसा हालत हो गई कि चाल, गति तो हम भूल गए और एक्सेलरेशन याद नहीं हुआ। तो वैक्यूम सा हो गया यार। हमने कहा कहाँ फंस गए ज़िंदगी में, यहाँ तो इंजीनियरिंग होनी नहीं है, इससे अच्छा BSc BA कर ले तो ठीक था। उस टाइम हमें याद है हमारे जो सीनियर्स ने हमें आगे बढ़ के मेहनत कराई, नोट्स दिए पढ़ने को, बताया क्या पढ़ना, किस किताब से पढ़ना, कब पढ़ना है। राणावत मेरे बैचमेट है, हम एक ही साइकिल पर आते थे। रैगिंग होती कि रैगिंग के बाद में एक अच्छा सिस्टम था, बॉस ठोक पीट के अच्छा खिलाते थे ज़बरदस्ती कि खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। राम शाम को थे तो शुरू में बुरा लगता था, पैसे थे नहीं थे पूरे, बॉस ने कहा। तो उसके बाद में ये छोड़ने लगी, थोड़ी आज रैगिंग और हो जाए तो कुछ समोसे मिल जाएंगे, तो हम रैगिंग करवाने भी लग गए थे। तो ये ऐसा माहौल था, मस्ती का माहौल में। बच्चों, स्टूडेंट्स में आप पे कर रहा हूँ, मैं चीफ वार्डन था, फैकल्टी भी हूँ। आप डर के जी रहे हो, आप नौकरी के डर से एडमिशन लेते हो, नौकरी का डर 4 साल तक रहता है। हमारे टाइम में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता था, डिग्री के बाद में 6 महीने सेशन लेट होता था, साल भर लेट होता था, स्ट्राइकिंग होती थी। पब्लिक सेक्टर के लिए हम दिल्ली एग्जाम देने जाते थे, 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आता था, पे एंट्री होता था। 2 साल तक हमें नौकरी नहीं थी। नौकरी नहीं थी तो शादी भी नहीं होती थी घर में। लेकिन ना हमारे पेरेंट्स ने, ना समाज ने, ना हमारे दिमाग में कभी आई कि हमारे पास जॉब नहीं है। एक कॉन्फिडेंस होता था कि हमारे पास में MREC की डिग्री है। मैं मेटलर्जी में था, मेटलर्जी को रॉयल ब्रांच बोलते थे, केवल रॉयल ब्रांच के। एक सच्चा किस्सा है, हमारे वसुंधरा में रहते थे, पड़ोस में ही मेरे कास्ट के कम्युनिटी चौधरी थे। वो आए घर पे, कहा साहब बेटा इंजीनियरिंग कर लिया आपका? कहा कर लिया। कि किस में? कहा साहब मेटलर्जी में। कहा यार सिविल इंजीनियरिंग होती तो अच्छा देश मिल जाता है इसको। तो ये उस टाइम सिविल इंजीनियर्स की वैल्यू थी, मेटलर्जी की वैल्यू नहीं थी। तीसरा जो काम हुआ हमारे यहाँ पे, MREC में ई वर्ड था। आज हमें राकेश, हम सुबह बैठे हुए थे, ये बात चल रही थी कि इतना चेंज क्यों हो गया, माहौल इतना चेंज कैसे हो गया। कोचिंग सेंटर्स ने कर दिया, वे पेरेंट्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल कि हम आप चीज़ को आपको वो सिखा नहीं पा रहे जो सीखनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, जॉब्स का इतना प्रेशर है। तो MREC में ई वर्ड होता था, MNIT में आई आ गया। ई इज रिमूव, ई मीन्स इमोशन, आई मीन्स इन्फॉर्मेशन। हमारा जो इमोशनली हम अटैच थे वो खत्म हो गया, अब केवल इन्फॉर्मेशन रह गए। ये कंपनी आएगी, ये प्लेसमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, है इमोशंस खत्म हो गए। आज भी सर, डायरेक्टर साहब बुरा ना माने, आज भी अगर मेरे बॉस कह दे पहले कि आप पंडल वहाँ आना है, तो शायद मैं डायरेक्टर साहब से एक बार हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि सर प्लीज बहुत अर्जेंट नहीं है, मेरे बॉस ने बुलाया। ये रिश्ता आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं, बॉस इज बॉस। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, मैं चीफ वार्डन रहा 6 साल तक लगातार, बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज आई लव स्टूडेंट्स, आई लव टू वर्क फॉर स्टूडेंट्स। एक कहावत है जो राकेश ने, राणा साहब ने और हमारे प्रेसिडेंट ने उल्टी कर दी थी, बिल्कुल डिफरेंट, कभी नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस भी नहीं होता। एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। ये पहली बार हुआ राकेश वगैरह ने कि कुआं प्यासे के पास आया। ये मेरा पीछा करने ये से लगा से बोतल से निकला हुआ जिन है, रोज आ जाता बॉस मुझे क्या करना है लड़कों के लिए, हम क्या हेल्प कर सकते हैं। और कोविड के टाइम पे इन्होंने जो हेल्प की है, साइकिल बैंक बनवाया, पुरानी ठीक जितनी खराब साइकिल थी करीब 500 साइकिलें ठीक की।
इन्होंने पेड़ पौधे लगवाए, नर्सरी डेवलप की, गरीब लड़कों की कोविड के टाइम में कुछ ऐसे पेरेंट्स थे दे लॉस्ट देयर जॉब्स, पैसा नहीं था, इन्होंने स्कॉलरशिप दी, इन्होंने फीस भरी। बिल्कुल, वो तो है ही पैसे से, और हमारे लड़कों के लिए रोज आते थे। पहली बार हुआ कि जब कोई एसोसिएशन हमारे पास में आ रही है कि साहब हम क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या करें बताइए, तो मुझे रोज काम ढूंढना पड़ता था। भाई राकेश यार इतना पैसा दे दो, आज साइकिल बैंक करना, आज ये करना, किसी को किताबें देनी है, किसी की फीस भरनी है, किसी का हॉस्टल में खाने के मेस के फीस भर दो। ये आपने किया सर, मैं आपको पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस मुश्किल घड़ी में ये हमारा सपोर्ट किया। दूसरा, एक अच्छी व्यवस्था हुई है सर, अगर कंटिन्यू रखें तो अच्छी बात है कि उससे पहले जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर होते थे वो इनसे, और मेनली जो समाज एलुमनाई एसोसिएशन को संभालते थे, वो काफ़ी टाइम ऐसे रहे थे जो MREC के नहीं थे, तो ये थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट इनसे नहीं हो पाया। पिछले 3-4 से लव भार्गव के बाद में या दिलीप के बाद में लगातार ये चल रहा है, उससे वी आर वेरी कंफर्टेबल। राकेश से बात करना बहुत कंफर्टेबल है किसी अननोन आदमी से बात करने के लिए। तो ये आप मेरे छोटे से शहर है। तीसरी बात, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ बैठे हुए डायरेक्टर सर ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, सरकार का नियम है, और शायद हम वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन विच NEP इज वी हैव इम्प्लीमेंटेड। इस सर ने आते ही NEP इम्प्लीमेंट की है। अभी मेरे को उन्होंने सर ने हेड का चार्ज भी दे दिया डिपार्टमेंट का, मैं वापस हेड बना दिया, सेकेंड टर्म है मेरा। इस NEP के तहत उन्होंने 2 चीज़ अच्छी कही है। अब आप लोगों का सब हम सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये है, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा 3 अकेडमिया से और 3 इंडस्ट्री से हम विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग साइंटिस्ट या विजिटिंग एक्सपर्ट्स हम इन्वॉल्व करेंगे। 12-13 डिपार्टमेंट, 36 से 40 आदमी हम इन्वॉल्व करेंगे। हम चाहते हैं कि अकेडमिया से तो हम ढूंढ लेंगे, IIT से, MNIT में हमारे जहाँ बंदे हैं MREC के, इंडस्ट्री के आपके हर ब्रांच के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट आप हमें नाम सजेस्ट करें, कहीं उनको हम फॉर्मली यहाँ पे जोड़ें, इज्जत के साथ उनको बुलाएंगे, हम इज्जत देंगे, इसको इज्जत के साथ हम रखेंगे। जो भी उनका सम्मान होगा, सम्मान में कहीं कमी नहीं होगी, मान भी होगा, दाम भी होगा, सम्मान भी होगा। ये हमारा सर ने पहले बोल दिया। इसके लिए सर थैंक यू वेरी मच, हम आपका साधुवाद देते हैं। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, किससे बहुत है। और अशोक जी ने कहा कि 46 साल से काम कर रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अगले 46 साल काम करूँगा आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच। Thank you, respected Upendra Pandal was one of our guiding force. Now I request one more former Dean Alumni Affairs, our alumnus and professor in mechanical, Professor Dilip Sharma Bose, to share your memories with Alumni Association. Respected Dilip Sharma Bose, your time also 3 minutes, though you may take more as previous members have. Thank you, Rakesh ji. Honorable Director Sahab, dignitaries on the dais and off the dais, of course, my bosses and young budding engineers which are going to be engineers as well as engineers. I'll again be speaking in mixed mode, Hindi as well as English. I'm not a good orator. I joined MREC in 1984 and passed out, rather graduated in 1988. But जब मैंने graduation किया, frankly speaking, at that time I was not knowing what alumni meant. What is the role of alumni? Alumni कर क्या सकते हैं इंस्टीट्यूट के लिए, सिवाय अडवाणी मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट के मुझे और कुछ नहीं पता था कि alumni का क्या रोल होता है। एंड ऑल द सीनियर्स मेंबर्स दे नो कि अडवाणी मेमोरियल हमारे हार्ट से कितना जुड़ा हुआ है। बट फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज अ फैकल्टी ओवर हियर, and being a faculty then I got associated with alumni functions। और जैसा कि रोहित बॉस ने बताया कि हम बहुत डेडिकेशन के साथ सिल्वर जुबली फंक्शंस मनाया करते थे। इवन माय फैमिली मेंबर्स, माय वाइफ, माय किड्स, दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट एंड आई वुड बी हैप्पी टू शेयर कि वहाँ पे डांस की प्रैक्टिस करते करते मेरी डॉटर डांस में इतनी एक्सपर्ट हुई, शी won 3 awards at the school level and district level or just by participating in the alumni affairs functions. Now again I got an opportunity to become the first dean of alumni affairs, and मेरे डीन बनने से पहले I was associate dean alumni affairs, और उस टाइम से पहले probably 2012
was the first year, which I am, if I'm not mistaken, was the first year in which Institute and Alumni Association together celebrated the Silver Jubilee function. उससे पहले सिल्वर जुबली फेलिसिटेशन फंक्शन कभी इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व नहीं होता था, सारा फंक्शन MNITJAA वाले ही मिलकर कराया करते थे, एंड वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट. 2012 में it was decided that institute will also participate in it, और alumni association और institute मिलके सिल्वर जुबली फंक्शन फेलिसिटेट करेंगे. एंड देन उसके बाद 2014 onwards, I remember we also started felicitating the golden jubilee entry batch. सिल्वर जुबली पास आउट के साथ साथ गोल्डन जुबली एंट्री बैच भी हमने फेलिसिटेशन शुरू किया. And I'm happy to notice that that process is, that ritual, that thing is still going on. And over the years, what I have observed, things have really grown and gone into several heights. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड. प्रोहित जी ने बताया कि किस मुश्किल से इन्होंने सिस्टम को शुरू किया. बट ओवर द इयर्स नाउ व्हाट आई फील, नाउ दिस एलुमनाई एसोसिएशन इज मैच्योर इनफ and capable enough to do wonders for the institute, and I am sure in future also we'll have the affection and the dedication of these alumni for the growth of the institute. I won't be speaking much about it, and with this I would again like to thank you all for coming on this foundation day, and I hope that in future also we'll be having many more such occasions. Thank you. Thank you, respected Dilip Bose. My one of the two mentors when I was guest faculty at Mechanical Department from 93 to 95. First one was respected NS Yadav Saab, and second respected Dilip Sharma Bose. Now, one important event to be declared. Your association, first time in the history of our institute, organized a MNITJAA startup contest, a startup challenge for MNIT students and alumni. 52 entries were received. Out of those, 40 were qualified in all respects. After prelim qualification, only 8 entries reached to the finals, and yesterday evening the final round concluded, and our expert team handed over us the results of first, second and third candidates. I request respected Devraj Solanki Bose, our president, to announce the results with respected Solanki Bose, please. So, good evening, sir. जैसा राकेश ने बताया, पहली बार वी हैड ट्राइड कि हम हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें इस तरह की एक भावना, एक स्किल डेवलप करें ताकि वो नौकर बनने की बजाय अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें, खुद एंटरप्रेन्योर बने. इस तरह की सोच के साथ में हमने सोचा कि क्यों नहीं, आजकल स्टार्टअप्स का काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो एक स्टार्टअप चैलेंज हम MNITJAA के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं. और हमने ये सोचा कि टू बिगिन विद, जो भी स्टार्टअप के लिए एंट्रीज आएंगी उसमें हम जिसकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, जिसका स्टार्टअप सबसे अच्छा लगेगा, हम उसे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज देंगे. सेकंड वाले को हमने 75,000, थर्ड वाले को हमने 50,000 का प्राइस सोचा है. और जो बाकी रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स थे उनको हमने कंसोलेशन प्राइस के लिए 5,000 रुपये का देने का रखा है. तो हमने एक्सपर्ट्स की सिलेक्शन किया, जजेस का सिलेक्शन किया कि कौन इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग तो एक्सपर्ट्स हैं नहीं इस फील्ड में. तो हमारे जूनियर हैं, हमारे LM हैं पुनीत मित्तल, प्रथम सॉफ्टवेयर के मालिक हैं वो, और काफ़ी रिनाउंड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, और स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्ट करते रहते हैं. तो हमने उनको एज ए जज बुलाया यहाँ पे. एक हमारे सीनियर है संजय यादव जी, 89 बैच के पास आउट हैं, वो भी स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं. स्टार्टअप्स का करीब करीब 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का एवेल्युएशन वो कर चुके हैं. और एक हमारे सीनियर हैं सुभाष अग्रवाल बॉस, आने वाले थे, तबीयत खराब हो गई उनकी, आ नहीं पाए आज. वो 86 के पास आउट हैं और उनका खुद का बिजनेस है,
ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो ये 3 हमारे जजेस थे, जिनमें 8 पार्टिसिपेंट्स आए, उन्होंने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। जैसे आजकल वो टीवी पे बड़ा फेमस है शार्क टैंक, उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए। एक उन्होंने कंपैरेटिव एक मार्किंग की शीट बनाई, मार्किंग की शीट बना करके तीनों के एवरेज करके फिर जो विनर आए उनको हमने सेलेक्ट किया कि ये विनर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो मैं नाम अनाउंस करता हूं। फर्स्ट है हमारे 360 वर्चुअल इंडिया, विपुल एन अतुल पटेल। ये दोनों 2019 बैच के हैं, 2019 बैच के हैं। सेकंड आए हैं आयरा स्ट्रीमिंग, अंकुर नारायण सिंह, राहुल और शशांक कुमार बिंदल और सुरभि जैन। थर्ड आए हैं देवस वर्षे, नवीन गढ़वाल, 2018 के हैं ये। इसके अलावा जो है ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इसके अलावा राहुल सेन, गौरव अग्रवाल, देवाशीष जोयल, अभिकल्प कौशिक और ये क्या मेडिटोरियन कॉम, नाम नहीं है इनका, शुभम और अशोक तांबी, ये कंसोलेशन प्राइज के लिए है। तो मैं डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमने सर यहीं पे चेक देने का रखा है आपके हाथों से। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड काइंडली कम ऑन द स्टेज सो दैट फर्स्ट ही है। आइए आइए, सेकंड रनर हो गया ना। कंसोलेशन वाले जो है 5 वो आए हुए हैं यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएं एक बार आप सभी लोग ना। All the remaining finalists come on the stage, please. All the remaining finalists. I request executive committee members come on the stage very fast. Arun Bose, all the executive committee members as early as possible on the stage, please. All the executive committee members, please come on the stage. चलिए चलिए अब चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए, आप नाम पूछ लीजिए उन्हें कह दीजिए सभी। चलो बोस आ जाओ, अरुण बोस प्लीज आगे आए। आप चलिए बहुत सारे लोग, सब साथ आप एक एक दे दीजिए सब लोग, आप लोग। हाँ यार, हाँ
सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से निवेदन है, एक एक चेक आप एक एक फाइनलिस्ट को दें। आदरणीय अरुण बोस, अमित सुरेला, चंदन लोहार, फाइनेंस सेक्रेटरी भूपेश एंड राजेंद्र बोस। मात्र 4 दिन के समय में 40 एंट्रीज प्राप्त हुई, 50 सॉरी, और उसमें से 2 एंट्री हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स थे लोकल चैप्टर्स में, इसलिए उनको हमने कंटेस्ट में नहीं रखा। थोड़ा जल्दी कीजिए सभी लोग, प्लीज जल्दी कीजिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स थे, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कंटेस्ट में। हमें आशा है अगले वर्ष ये कंटेस्ट और भी बेहतर होगा। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रोफेसर राकेश जैन बोस, डीन एलुमनाई अफेयर्स, टू एड्रेस अस प्लीज। योर टाइम लिमिट इज ऑल्सो 3 मिनट्स प्लीज। Dignitaries on the dais, alumni of the institute, I am delighted to be here, and it's for me a double delight because I am an alumnus as well as faculty and dean, so I have to play role of both as a faculty, dean and as an alumnus. मेरा जब एडमिशन हुआ था यहाँ 1981 में, तब वो बैच के साथ एक अजीब सी घटना हुई थी, एंड वी हैड फ्लड इन द जयपुर, और ये पूरा कट ऑफ हो गया था सामने से ओटीएस वाला, और मैं डे स्कॉलर, तो हमको रोज उस साइकिल को उस खड्डे में से निकाल कर चढ़ाना पड़ता था। तो वेरी हार्डशिप, डेली ये रूटीन था, एंड बिकॉज दिस कैंपस वॉज सो गुड एट द टाइम, एंड आई थिंक मेरे को उस समय स्पोर्ट्स की फैसिलिटी स्कूल डेज में नहीं थी, कुछ इश्यूज था, तो आई यूज टू कम ट्वाइस हियर फ्रॉम जवाहर नगर टू हियर थ्रू दिस खड्डा, और इट वॉज वेरी डीप, बिकॉज आई यूज टू प्ले द टेबल टेनिस। जब जिस डायरेक्टर्स लॉज जो है वहाँ पर स्टाफ क्लब शायद था, और वहाँ पर टीटी की टेबल रखी जाती थी, तो नितिन खोसला भी मेरा बैचमेट था, मैं उसके साथ, उसने मेरे को टीटी सिखाई यहाँ पर। सो बट इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, लर्निंग, हार्डशिप, ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ, एंड मैं तब से यही हूँ। सो आई फ्रॉम 1981 टू टिल डेट आई एम हियर। अशोक अग्रवाल जी मेरे से ज़्यादा समय यहाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। From RECs to MNIT, there is a big transformation. REC was a teaching institute. Now it has been transformed into teaching cum research institute. Now we have around 5,000 students, out of which 800 students are PhD scholars doing state of art research here, around 1200 PG students, MTech students. So it's a big family now. But let me tell you frankly, whatever MNIT today is, it is because of you. We are nothing if you are not there. So it is all because of you MNIT is there. You are ambassador of this institute. You have done great to the institute directly or indirectly. So thank you very much for your contribution.
although we have achieved great heights here, we have been among top 50 NIRF institute, which is great thing, but we are not satisfied. We are good, but not great. And we want to be great. We want to take this institute to a greater height. We want to be among top 10 NIRF institute. This is our vision. This is vision of our director also. And for this we need your support, your contribution. We need your support in career counseling, mentoring, in curriculum development, in perception building, because we are not good at perception. All the time we are getting very low marks on this area. So we need your support. Overall, we need you because you are our family. Thank you. Thank you, respected Dean Alumni Affairs, Professor Rakesh Bose. We all will try to do our best, whatever possible, for betterment of our institute. Now I invite on the stage the winner of the startup contest for 1 minute address. Come on, dear. गुड इवनिंग एवरीवन। ये एक स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए कि अभी मैं और जो मेरे साथ में अतुल पटेल है, हम 4th ईयर मेटलर्जी के स्टूडेंट्स हैं एंड हम VR वर्चुअल रियलिटी और कोडिंग वगैरह इन सब पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बिलीव नहीं होता था किसी को कि हम मेटलर्जी के स्टूडेंट्स होके और ये सब कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग कि अभी जो लाइव स्ट्रीम चल रही है सर, मेरे पेरेंट्स और मेरी दी वो देख रहे हैं इनको लाइव स्ट्रीम, तो सबसे पहले मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पे बिलीव किया। और सेकंड थिंग, इस इंस्टीट्यूट ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है, एक रिकॉग्निशन दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया एंड थैंक यू सो मच। Congratulations and best wishes, dear, for your future. Now I invite the convener of this program and Vice President of our Alumni Association, respected Sri Tribhuvan Singh Ranawat Bose. Honorable Sri N.P. Padesar, Director MNIT and Chairman MNITJAA, Sri K.C. Gupta Boss, our prestigious alumni of 1968 batch, Professor Rakesh Jain, sir, Engineer Devraj Solanki, the jubilant President of MNITJAA, our leader, Engineer Rakesh Kumar, our indefatigable General Secretary. Indefatigable, कभी नहीं थकने वाला, कब सोते हैं ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इनका DNA का टेस्ट कराएं तो और डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी एंड द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द ट्रेंड सेटर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ MNITJAA, ट्रेंड सेटर। The present EC is a trend setter in many ways. Team premier तो बिल्कुल है ही। Today marks the foundation day of the MNITJAA, a lesser known organization a couple of years ago that has taken a giant leap in a short span of 3 years despite facing odd situations like COVID, pandemic, lockdowns, etc. The recent years have been full of achievements, most of them being unprecedented ones, and our executive committee members are not surprised. Let me tell you, we are not surprised. Everyone else is about these achievements because they strongly believed in their intentions, hard work and cooperation of the fellow alumni in the interest of the institute, its students and alumni. For it had come with a vision, some clear goals,
with devotion. I will try to briefly tell you about the work done by us so far. Launch of online portal of the Alumni Association. Despite several efforts in the past, no fruitful online portal could be established. We, under the able guidance of Sri Devrajji, successfully brought up the portal, which is working efficiently to the expectation of alumni the world over. The portal has provided a common platform to all the alumni under the sky to interact and exchange views, ideas, suggestions. It also has the provision of providing an e-card, digital identity card, to each life member for free. It was because of the sincere efforts of the executive committee that MNITJAA saw its first ever online elections that included voters from across the globe. The number of voters shot up to almost 3 times than the preceding elections. The blood donation camp organized by the executive committee saw a jump in the number of donors this year, and around 310 units was donated by students, including good number of girls too. The camp was held in the memory of deceased alumni in the past, especially during COVID-19. To help students in steering their way towards a better career, the executive committee introduced an online program named Boss Se Baat. The aspirant students and fresh alumni could interact with the expert seniors in any field of specialty on a common platform. 2 series of this feature has been carried out till now. Another online program, Know Your Alumni, wherein a prominent alumnus having achieved excellence in his field shared her experience and gave guidance to other alumni students, was undertaken in coordination with our Tamil Nadu Puducherry chapter. The program was likened by a large number of alumni globally. The executive committee did not fall short in providing scholarships to the needy and eligible students. An amount of rupees 6,43,000 has been given as scholarship and a loan of rupees 1,98,000 during the period of December 19 to 22nd August 2022. These figures again are unprecedented ones. The executive committee took quite quick steps in extending medical help to critical alumni in emergency. An amount of rupees 6 lakh was collected by the committee in a short span of around 56 hours for a kidney operation of our alumnus through a contribution from our generous alumni. It is worth stating here that each and every paisa of the money so collected has been recorded and used for the sole purpose it was collected for. As a mark of maintaining transparency in its working and to keep the members abreast with the work being done by the EC, the minutes of the meetings of EC are not only uploaded on social media platforms but also sent to all the life members for their information on their personal emails. This was never been done earlier. The suggestions, views, comments of the members are taken note of and are considered. Needless to say, this process has been introduced by the present executive committee for the first time. The executive committee can proudly say that the current event that is being celebrated right now is part of the week-long festivities being carried out to mark the foundation day of MNITJAA for the first time in the history of MNITJAA. Another innovative activity organized for the first time in the history of institute by the MNITJAA is Startup Challenge for students and alumni, a welcome step
appreciated in all corners. Keeping pace with the fast-changing environment in the market and business, a technical session on AI and ML was also organized for the benefit of students and alumni. To spread the canvas of the MNITJAA in order to reach out to more and more alumni and rope them in, this year we authorized chapters for Madhya Pradesh, Pune, Mumbai, Bihar, Jharkhand and Delhi NCR were constituted. The executive committee pursued the institute and got transferred an amount of rupees 65 lakhs that were lying with the institute since long in the form of alumni fee of students. Friends, it is evident from above that many unprecedented steps have been carried out by the EC. These activities have been welcomed, acknowledged and applauded by the alumni at large to an extent that we have risen hopes in the masses, kindled the expectations of the alumni to a great extent. Testimony to this fact is the steep rise in the number of new life members of alumni by about 620, an unprecedented figure again. To live up to these expectations, we have pledged that we will leave no stone unturned to glorify our institute and to take it to the top level with the cooperation from all. Thank you. Thank you, respected convener and vice president of our association, respected round of applause. This number more than 600 is for the old alumni only who have submitted 1,000 rupees with their form. The new members have increased tremendously, the number which I am not going to share. Now I request our dynamic president, respected Sri Devraj Solanki Bose, to address us. वैसे तो शेड्यूल टाइम से हम आगे चल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप सभी को नमस्कार। रेस्पेक्टेड पार्टी सर, हमारे डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के और हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन, देखिए हमारे सबसे यंग एल्मुनी जो है अभी वॉक करके आ रहे हैं, डॉक्टर केसी गुप्ता जी, हमारे सबसे सीनियर मोस्ट एल्मनस, हमारे सीनियर, हमारे एल्मनस और हमारे डीन प्रोफेसर राकेश जैन जी, हमारे इस प्रोग्राम के कन्वीनर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंजीनियर टीएस रानावत जी। जैसा कि रानावत बॉस ने बताया राकेश के लिए, उसी तरह के शब्दों को मानते हुए बोलते हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी राकेश यादव जी, सामने बैठे हमारे सीनियर एल्मुनाई, स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स। दो तीन बातें, जो एक बात तो सर ने अभी कही परसेप्शन इंडेक्स की, तो मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा इसमें सर। उससे पहले बॉस ने एक बात याद दिलाई थी, आडवाणी मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट, जिसके लिए एसोसिएशन को जाना जाता था। जनरली पहले ये स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज किया करते थे और हर साल होता था, और देश की सबसे टॉप की जो टीम्स हुआ करती थी बॉयज़ और गर्ल्स की, वो एमएनआईटी के कैंपस में रुकती थी। एमएनआईटी के बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर 7 दिन 8 दिन यहाँ उनके मैचेस होते थे, फाइनल मैचेस होते थे। टीवी के उस वक्त आकाशवाणी हुआ करता था, आकाशवाणी पे रेडियो के ऊपर उसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहता था। टीवी आने के बाद में दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट होता था। इट वाज अ मैसिव प्रोग्राम, और एमआरईसी उस ब्रांड के कारण जानी जाती थी कि आडवाणी मेमोरियल एमआरईसी करा दी। और तो सर ये एक ब्रांड है एमएनआईटी का, आडवाणी मेमोरियल इज ए ब्रांड। हम अगर इंडस्ट्री दूसरी जगह जाए कहीं भी और आडवाणी मेमोरियल की बात करें तो लोग तुरंत ध्यान में आता है कि एमआरईसी,
या MNIT। ये 1994 में किन्हीं कारणों से आडवाणी मेमोरियल बंद हुआ। फिर बहुत लंबे अरसे के बाद में हमारे बहुत सीनियर एलुमनाई हैं, महावीर पूनिया बॉस गुड़गांव में है, उनकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत बड़े। उनके प्रयासों से और हमारे कुछ सीनियर हैं, आशुतोष दीक्षित जी, राजकुमार चौबे बॉस, उनके प्रयासों से फिर 2013 में हमने दोबारा आडवाणी मेमोरियल टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज कराया और बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ पे देखने के लिए। फिर 2016 में इसको दोबारा तीसरी बार ऑर्गेनाइज किया। फिर हमने ये सोचा था कि हर 2 साल के गैप के अंदर आडवाणी मेमोरियल टूर्नामेंट हम कराएंगे, बट वो अनफॉर्चुनेटली 2018 में नहीं हुआ और फिर कोविड आने के कारण वो नहीं हुआ। इस साल हमारी प्लानिंग में यह है कि हम आडवाणी मेमोरियल टूर्नामेंट कराएं, शायद नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में। बट उसमें अभी हमने जब पता किया यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिसर से, तो उन्होंने बताया कि बास्केटबॉल कोर्ट का जो टर्फ है वो खराब स्थिति में है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये बताया कि शायद कुछ सैंक्शन हो गया है वर्क और जल्दी होने वाला है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार उसको ज़रा दिखाने से, तो हम कोशिश करेंगे। दूसरा, हमने टीम से बात करी थी तो वो कह रहे हैं कि साहब हमें एयर फेयर दीजिएगा और हमें 3 स्टार होटल से कम पे नहीं रखेंगे। तो वो खर्चा बहुत है, हमने एस्टिमेट किया लगभग 60-65 लाख रुपए का खर्चा है। तो देखेंगे वो कैसे मैनेज होता है। वो हम चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट भी उसमें हमें सपोर्ट करे उसमें, क्योंकि ये एक ब्रांड है आडवाणी मेमोरियल जो MNIT का परसेप्शन इंडेक्स को बहुत बढ़ाता है। दूसरा, हाँ, एसोसिएशन ने किया, 100% एसोसिएशन के एफर्ट से हुआ है। दूसरा, एक इवेंट हमने बहुत मतलब 2015 के अंदर आशुतोष दीक्षित बॉस हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो एक थॉट आया कि ग्लोबल एलुमनी मीट की जाए, और फिर वो बड़ी सक्सेसफुली ग्लोबल एलुमनी मीट का यहाँ हमने आयोजन किया MNIT के कैंपस में। देश विदेश से हमारे काफ़ी जाने माने एलुमनस यहाँ आए, 400-500 एलुमनस यहाँ इकट्ठे हुए और 2 दिन के सेशन रहा, बड़ा अच्छा सेशन था। फिर इसको दोबारा शायद 2018 में ग्लोबल मीट हुई थी, उसके बाद भी नहीं हुई। तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह तय किया था कि 1 साल ग्लोबल एलुमनी मीट करेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर आडवाणी मेमोरियल करेंगे। तो वो पिछला साल तो कोविड के कारण निकल गया, ग्लोबल भी नहीं हो पाई। इवन हमारा सिल्वर जुबली फंक्शन भी बड़ा 2 बैचेस 4 बैचेस को एक साथ करना पड़ा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन था। इस बार हम सोच रहे हैं कि ग्लोबल नहीं हो पाएगी तो हम इसको आडवाणी मेमोरियल को किसी तरह से करें। एक परसेप्शन इंडेक्स के लिए ही जो हमारी फेलिसिटेशन, जो कल्चरल इवनिंग्स हो रही है या फाउंडेशन वीक सेलिब्रेशन हो रहा है, ये हमारे जितने दूसरे चैप्टर्स हैं रिकॉग्नाइज, वहाँ पर भी वो चैप्टर्स इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ जगह पे 27 तारीख को ही कल्चरल इवनिंग्स हैं, मीट्स हैं, और हमने एक मोमेंटो तैयार करवाया है उसके लिए, जिसमें मोमेंटो पे MNIT प्राउड एलुमनस लिखा हुआ है, और वो इस तरह का है कि वो उनके ऑफिस में, वर्क प्लेस में वो उनको रख सकते हैं। तो जो भी कोई उनसे मिलने आए तो वो देखें अच्छा आप MNIT के हैं, तो देखें थोड़ा सा नॉलेज मिलेगी। तो वो हम हमारे चैप्टर्स में भी सबको हमने डिस्पैच कर दिया, लगभग कुछ को मिल भी गया। और यहाँ भी हमारा जो कल्चरल इवनिंग है 27 को, वहाँ हम जो भी हमारे एलुमनी वहाँ आएंगे उनको सबको हम वो मोमेंटो देंगे। तो ये हमारे कुछ प्रयास हैं, जैसा राकेश जैन सर ने बताया, तो कि कैसे हम हमारा इंस्टीट्यूट का परसेप्शन इंडेक्स को इंक्रीज करें। एक जो चीज़ हमारे रानावत बॉस ने बताई थी स्टूडेंट्स के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, एक चीज़ जो मुझे फील हुआ, जैसे अभी 22 तारीख को हमारा बॉस से बात का प्रोग्राम था, अमेरिका से 96 की पास आउट अनुभा, जो खुद एंटरप्रेन्योर है वहाँ पे, बड़ी कंपनी है उसकी सॉफ्टवेयर की, उसने वहाँ से उस सेशन को अटेंड किया। एक कुलदीप शर्मा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे है, 2014 के एलुमनस है। उन्होंने उसको एड्रेस किया, स्टूडेंट्स थे 20, इतना, और टॉपिक था कैंपस टू कैरियर, कि आप अपना कैरियर कैसे चूज करोगे, कैसे आप अपना कैरियर बनाओगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बड़े अच्छे उन्होंने अपने विचार दिए थे अनुभा ने और कुलदीप ने। लेकिन प्रयास हमने क्या किए, एडवर्टीजमेंट हमने क्या किया, पंडेल बॉस की हमने मदद ली, और जितने VLTC के अंदर लेक्चर्स चल रहे थे उस समय सब में हम गए,
10-10 मिनट हमने बच्चों को बताया कि MNITJAA कर क्या रही है, आप लोगों के लिए क्या कर रही है, उसके लिए भी बताया कि भाई ये हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप लोग जुड़िएगा। पैम्पलेट्स हमने बनाए, हर हॉस्टल में रूम्स में हमने पैम्पलेट्स डिलीवर कराए, पोस्टर्स बनाए हमने, पोस्टर्स को हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे लगाया, लेकिन स्टूडेंट्स आए कैंपस टू कैरियर में 20। फिर नेक्स्ट डे हमारा सेशन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आज की डेट में ये बर्निंग टॉपिक है, आज की टेक्नोलॉजी में ये बर्निंग टॉपिक है। स्टूडेंट्स जो कोडिंग कर रहे हैं वो जानते हैं, और नहीं भी कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच का बंदा हो, ही हैज़ टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाला जमाना उसी का ही है, और मशीन लर्निंग का। वो हमने सेशन रखा, अपने कंट्री के जाने माने सुरेश कुमार सिंह जो हैं इसके एक्सपर्ट हैं, हमारे मुंबई से जो एलमनस हैं हमारे राजेंद्र नागली जी, उन्होंने अपने एफर्ट्स करके उसको बुला के ये ऑर्गेनाइज कराया। लेकिन स्टूडेंट्स कितने आए? 18। तो ये हमने सोचा कि क्या प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के साथ में, कि क्यों नहीं स्टूडेंट्स को इतना एंथू है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जुड़े। हो सकता है कि यहाँ एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं हो, जैसा पंडेल बॉस ने कहा। एनवायरनमेंट को कैसे डेवलप करना है, हम आपकी एडवाइस पे हम आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स में एक डिफरेंट काइंड माहौल डेवलप हो यहाँ पे, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। बॉस कह रहे हैं कि NEP के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियलिस्ट को लाए, हम ले आएंगे, हम आपको आइडेंटिफाई करके भी दे देंगे, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम खर्चा कर लेंगे, हम बुला लेंगे अपने खर्चे पे उनको, हम रुकवाएंगे अपने खर्चे पे। लेकिन स्टूडेंट तो आए, अगर स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो हम उनको बुला करके उनका अपमान नहीं कर सकते। हम वो कहेंगे यार आपने मुझे कलकत्ता से बुला लिया और यहाँ 10 स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा इनके सामने। तो ये थोड़ा सा सर देखिएगा। बाकी आप लोग सब आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने, पुरोहित बॉस ने, RK अग्रवाल बॉस ने, आपने जो अपने अपने बातें बताई हैं वो हमारे लिए आई ओपनर है कि कितना मेहनत और कितना अथक प्रयास से आज आप लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया है, और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट बॉस। आप सब लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बहुत सारी अडवाणी और जो एक्टिविटी होती हैं उनके बैकग्राउंड में जो पैसा आता है, मैं जितना 2016 से जान पाया हूँ, स्पॉन्सरशिप लाने में एक आदमी का यदि कोई नाम लें, वो है हमारे रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट देवराज सोलंकी। वो जब ये प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी इतना पैसा। और अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय चेयरमैन साहब को काफ़ी समय में ले चुका हूँ, अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे चेयरमैन MNITJAA एंड डायरेक्टर MNIT जयपुर, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर NP पादी साहब, टू एड्रेस ऑल ऑफ अस। रेस्पेक्टेड पादी साहब। Very good evening to all of you, and initially I thought of not using any paper for my speech. Normally I go extempo. But in the process of listening to all of you, so wonderful personal experience those are being shared, I thought let me at least note it down, a couple of things. Just one small thing that really touched me a lot. I hope I'm audible now. Yeah. So when you are very infant and probably young too, so ideally we are attached to our mothers, and then we grow and then get into nursery, and then we are partially attached to both mother and father, and then getting into the school, then we slowly start detaching from our parents. Please don't take my statements very seriously, but this is what I felt. Means all your kids, when they're in schools, 3rd, 4th, 5th standard, even as a parent, if you say some error in your class notes, they will not trust you actually. They will say only whatever my school teacher says will be the final one. And then when you grow and get into college career, you always listen to your classmates more than professors. I do not hesitate
to say, even being a professor, we always believe that, please concentrate on this particular chapter to perform well in a particular course. You listen to that. Even though the professor may be very serious, no, you please do this, but you simply listen to your seniors. But the moment you graduate, probably alma mater is the only thing left that you trust blindly. And one more thing, actually, I could see, during your discussions with all alumnus, I mean, you were very emotional. I mean, though you look very strong physically, but we all are emotional. But when you sit together, you become more emotional. Am I right? I think everyone is nodding head. So I hope actually my guest was absolutely right. The only thing what I'm missing today, why those wonderful, alma maters could have come with their family and kids to participate in the function. So I'll request President, in future, please also request the family members to join. Because the kids, they must know how my dad or mom, is very attached to the other fellow colleagues. So to me, actually, you should come with family. That is number one. Number two, as it has been raised, the last point, I'm starting my speech from that point itself, because it is extempore. MNIT students, they are very, very important factor to us. And when it has been told to me that for an important event, the participation number was not so significant, I feel slightly disappointed, being the head of the institution. We'll see to that. Any effective interaction session which is coming from the alumnus should be wholeheartedly organized, and perhaps all our students must participate. So I think that is where I could see why the room is not full today. It is not about one lecture. It is about every moment. Now there are more than 5,000 students are in the campus. Why this hall is not full? So I think we, at least 10 to 20 senior people, must sit together over a cup of coffee and discuss how to reach our students, how to see to that, they also feel equally excited to be part of this family. To me, any institution today, if they are doing very well, that is only because of alma mater. If your alumnus, the graduate students are doing well, then your institution is keep on rising. And if they do not perform well, then your institution do stay in the same position, all right? So once again, this is one of the important points. Because you are always, kind of coming forward to help the institution. So the first step is get connected to the younger students, starting from the first year itself. Not only at the time when they graduate, but we need to get connected from the first year itself. Now, coming back to my formal speech now, Sri K.C. Gupta ji, one of the senior most alumnus. But nevertheless, because I like to connect each one of you and whatever the learning I have, achieved today after listening to all of you. K.C. Gupta ji seems to me is a very, very intelligent person, am I right? And who loves mathematics, and that's what you said. Yeah. Correct. That's correct. And so I hope my guess is not absolutely wrong. Yeah. Thank you very much. So I think with a short duration, we are meeting almost for the second time perhaps, and I met him once in the past. Then moving to Ashok Kumar Purohit ji, and wonderful gentleman, and probably I could see that you perhaps given almost 25 to 30% of your life to this whole process, and probably sacrificing your family life sometimes. So I think a wonderful round of applause to such person. Moving to Rajendra Kumar Agarwal ji, and one moment that I love, you said that you used to keep this banner actually many number of times and reuse or recycle. I still remember when we were young kids, sometimes when you organize any festival like Ganesh Puja or Saraswati Puja,
then most of the accessories, I mean, because 40, 50 years back, money was not a very easy toy to have it actually. So that time perhaps I know many family members preserve some of the accessories that to be reused in the next year. So that recalled me how parents, and as well as the textbooks, they're being recycled. Like cousins to cousins to cousins to, your younger brothers, they do study. And by the time it comes to you, probably you will be having 3 to 4 introductory pages missing out of this. But still you continue to use it, am I right? And I still, this occasion, I like to remember my mother. Those missing pages actually my mother used to write in hand and then stitch the book actually for my younger days. So these are all wonderful to recall today. So I was sitting there as a formal guest or a part of this system, but I was just connecting myself to the society at large, the way you were presenting. And Ashok Agarwal ji, a wonderful professor, and I always willing to learn Hindi from him, but I do not know when I can really learn. He is a wonderful person, and I am very sure you will complete 50 years of your collaboration with both MNIT as well as the alumnus. Okay. And Upendra Pandalji, all-rounder, I mean, I thought he's a person who can work hard, who can do something for the society and students, but slowly I realized he's a very humorous and very good dancer, and that's a wonderful thing to know about here. And Dilip Sarmaji, he's very honest in a sense that he said he had no idea about alumnus during his alma maters, perhaps what is going on in alumni associations. But you knew something about Advani Memorial Basketball. I think true, but he's a wonderful researcher. I came to know that he has achieved many patents recently, and some of his students also received many awards. So what I wanted to tell you, when actually such wonderful cash awards of approximately 1.9 lakh rupees cash prize his students recently received, and probably in our alumnus connect, somewhere you have to establish what is happening in MNIT, what is happening in alumnus circle, and what is happening, a connection between these two. So probably those exchanges will enhance. For example, today 3 of our students and many consolation awards we have given to, and those messages should reach to our students, those who are just in first year or second year. So they must wait for the day that when we are in third year or final year, we must get this award. That should be the commitment level actually we should showcase. And once this is being achieved, I don't see, student must sit on the floor to, be part of this family gathering, okay? So that is the next time we'll see to that it is very well received by students. And the motivation factor, these students must convey, actually it was not very attractive and the presentations were a bit boring. We lost almost 2.5 hours, but it is not exciting. But once that message reaches to hostel, and probably it is very difficult for them to bring to this room, okay? So we need to see to that. It's a wonderful beginning. I'm very happy that after a very, very long time you are organizing such activity in the campus and the founding day perhaps, okay? So it's a wonderful day, but I request all my student friends to go back and see to that you participate in a very, large community base, okay? Almost all the hostels hostel mates must come here and encourage your seniors, okay? And just so that you are part of the family. Am I right? So that is one important thing. And then end of the day, my colleagues, and then Rakesh Jain sahab, he is also very nice about kuch khadda ke baare mein aap bata rahe the actually. So that is also interesting story. And then okay, हाँ, okay, so वो चढ़ के आते थे उस टाइम. Very. And also he mentioned something about table tennis. So I'll be very happy to invite to my home because I'm staying in the same home now. So probably you should visit sometime. We'll play some games together. Okay. And then T.S. Ranabat and then Devraj Solanki. And they are doing a wonderful job to the society, and please continue doing that. And I have been told that Rakesh Yadav is very
a different person working very hard. So I'm very sure as a committee members, I think you can still bring a lot of good things to the society. I will tell you actually, when I met them for the first time, probably Solanki ji has invited me for a lunch when we never knew each other. He knew I'm just a new director to this institution, and to be honest, actually, I had no idea who are you. But he has just told me that we are organizing some get together in that Khole, okay. So recently I visited there, and I recalled your invitation. You know, I thought I have missed a very wonderful opportunity. And then after that, we started talking one-to-one. And I'm very, very sure about it. Very rarely in any institution where the complete MNITJAA team and myself used to talk hours together in different points. See to that this organization, this relationship must grow over a period of time. Okay. So I think there is a healthy relationship, there is no doubt about it. But now we need to identify what best we can do to take this to the second level. I am a bit always, you know, like everyone must be knowing about it, I am a bit ambitious. I do not want to waste my time for such collaborations where it is, you know, not really taking to that point, okay. I know the strength of MNIT Jaipur. It is a wonderful platform. Alumnus are great. Now we have to see to that how to take it to the next level. Okay, and from my side, whenever there was a talk about a small room for a facility or what kind of facility, when they came for a small meeting to be held at MNIT campus, I was extremely happy. I said, why not? It is your institution, it is your property, everything belongs to you. So considering the basic rules and regulation, whatever the best support can be extended from the institution, it is always there. Okay, and not during my tenure, we'll also see to that the relationship is permanent for you. I am a very ad hoc person. I am here today, tomorrow I may not be there. But you and your institution and the relation will be a permanent asset. So please see to that you strengthen your relationship from time to time. I am not getting into all these statements that has already been told, what are the kind of beginning you people had and then the way actually you have grown over a period of time. But a couple of things I like to highlight, that what MNIT is doing today and how you can be proud of MNIT's initiatives being a alma mater. There are a couple of things to highlight. We have established an office for student wellness program, and there is a designated associate dean for wellness. And probably this is the first time an NIT of this country is going to experience an office of wellness, and that is for student wellness, where we want each and every one's problem will be addressed. Every individual student related issues need to be addressed, and I am very sure there are few cases where because of rules and regulations we may not be able to help our students, even though it is considered to be a wellness issue. So we need your cooperation, to perhaps actually you can work, align with our associate in wellness office and see to that you and our wellness office can do something for our students. When you say we are ready to contribute the scholarship or we are ready to contribute the tuition fees of a particular student who is not able to afford to pay, so probably we will be the first one to come to know who is not able to pay the fee. And after proper examination, the wellness associate dean will conclude that this gentleman needs X amount of the fee to successfully complete his undergraduate programs. And perhaps institute can see to that this is being met. But above and all, if there is an health issue, beyond a particular contribution, institution also cannot do much. So that case, perhaps the alumnus can come forward and see to that along with MNIT, we both can meet out the requirement of the student. So such kind of areas that can be identified by the alumni association so that such kind of problems can be addressed. Now the second issue, we have recently assigned 10 to 11 students of our undergraduates to each professor to have one-to-one contact. So probably through this process, maybe the relationship between
teacher-student relationship along with the kind of closeness. For example, if someone is having any issue related to academics, okay, or anyone needs some kind of actually mentorship or advisory, and whereas that can come or flow from alumnus, and probably that can be connected. Now, when you talk about an issue related to industry-based or employment-based curriculum, so we are introducing a new program to our academic plan, which is partly based on New Education Policy 2020. Today, what is the problem with the graduates? Because as Professor Upendra Pandalji mentioned, in his time actually there was no issue related to job. Job मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है. Parents peer pressure नहीं था. Sir, please try to understand. The problem today is at most a kind of a peer pressure, because even in a hostel, when during the placement session, one will be giving party to his classmates because he or she got a job of 20 lakhs, and others even not even screened or shortlisted. So then you build the pressure. But in your time, actually, that pressure was not there. No expectations. Today, when parents pressurize students or their kids that why your job, why you are not getting placed in the day 1 or day 2, why you are waiting till day 10. So because of that, there was a couple of issues and a lot of pressures. So we have introduced a program where the placement will not be an issue. We like to design a curriculum which not only allow you to graduate your undergraduate program, but also ready to get a job. So what we realized, a general common comment from the industry people, that your kids are not ready to serve from the day 0 of the admission. They need to be trained again and again. So now we are trying actually, why not those industry people can come to our campus at least 1 year prior to the graduation, so that once they graduate, instead of waiting for 1 year to get trained, probably within 2 weeks of introductory training, they can start delivering or participate in the product manufacturing. So we have 3 different tracks. One is academic track, one is private sector track, and the third one is going to be entrepreneurship track. So a student from the day 0 can be taught what is your interest, and based on your requirement, you can choose a different track to get graduated. Okay, so first 2 years will be normal, but during 3rd year, you can get into a new track based on your own interest. One more important aspect that MNIT is currently experiencing, because of the ranking model, the branch is based on your rank. So you may love to be a, let's say, computer engineer, and that's what most of us are aspiring today. But because of your ranking, or you have scored, let's say, 1 to 2 marks less compared to your friends, so you land up with electrical or mechanical or civil or metallurgy or chemical or architecture. So to avoid that kind of actually, because the students are very always, kind of emotional. So during the 4 years time, they are almost frustrated instead of enjoying their engineering study, because they keep on thinking, I wanted to study computer engineering, because they have been told from 9th standard itself that please target for computer science, and they could not get the right mark. So they land up with, let's say, X branch, which is not computer science. So they always, instead of enjoying the own subject, they start feeling that what they have really missed it. So we are introducing a program called minor programs. So you can be a graduate in electrical engineering, but you can do minor in computer science. But if you love your branch, then probably you can do honors in your electrical engineering itself. So this kind of provisions are now available. So I think you'll be very happy to know. Solanki ji, आपकी time में तो ये नहीं होगा ना? हाँ, very good. So I think these are all new things. हाँ, minor नहीं था ना? Okay, so now actually we have minor, means आपका branch क्या था actually? Mechanical. So you can have mechanical engineering degree along with minor in electronics or computer science. And it is true also, a civil engineering graduate can have minor in architecture. Are you getting my? So what a wonderful combination. Just try to see to that. And no, actually it will be open from 3rd year. Those 18 to 20 credits you have to earn, specialized course on that. So the moment you graduate, you do not graduate as a civil engineer, but you graduate as a civil engineer along with minor in architecture. So you gain both this expertise. Okay. So that is what we are slowly thinking of. Now one more interesting thing is that you all speak from your heart. Alumnus I have seen today, सब लोग बड़ा दिल खोल के बात की. एक्चुअली ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा. नॉर्मली इन प्रोफेशनल कैरियर
I think slowly if you see any industry, when you go for any chatting, actually people are more or less bit artificial, you know. They talk something which is not fact. But today I have seen a wonderful educated platform speaking something from heart, you know. That's very good learning. My younger graduates actually must learn this. Life is very interesting. If you look at those senior gentlemen, starting from KC Gupta to other seniors, it is wonderful talking to them. I do see a child within you, you know. I do see a very child within you all, because you speak from your heart. This is very interesting. And I could see that you are all committed to return whatever the best possible way to this institution. That itself is a great thing for us. I am very happy to know that you are all committed, not only for your community, but also gives something return to the institution. That's a very significant thing I have observed. Someone mentioned about the space. Okay, so now let's say this is a space for me, you know. I think this is yours. So why do you feel worried whether it is a 800 square feet room that you have started a long back, and or a small office room actually during your meetings? I think probably the guest house can be booked online. Rooms can be booked online. So to me, I don't see any difficulties for Alumni Association to carry out any activity around the year, subject to, you know, availability and other basic requirements. So I think there is no issue. So let us not get worried about the space for any event. Probably if this room is booked, we'll go for another bigger room. If that bigger room is booked, we can go for another bigger room. So space is not an issue. Now, one important is that this institution established a Dean of Alumnus Affairs, which is how old it is, the Dean of the Alumnus? 2012, so 10 years old, okay? And we are committed, we are meeting almost in a regular basis, and we'll see to that actually this alumni office can take this office to next level and connect to the members of Alumnus actually in a better way. I was talking to Professor Jain before coming to this meeting that we need to really work very hard. Our Alumnus is not really visible, you know. Visible in the sense they are doing wonderful jobs, as Professor Ashok Agarwal mentioned. But as a whole, I like to see thousands of alumnus in this campus, actually, a crowded day. That type of alumnus day need to be celebrated. Anything that you do, for me, you please do something very, very big, okay? And please, I mean, you will get all type of support from my side, but I want to see to that, you know, the whole campus is full of alumnus. And if you can do one event of such thing, that will be really great for all of us. Now, you all will be very happy to know that MNIT Jaipur has recently introduced a Outstanding Teacher Award or the Best Teacher Award. Okay, so based on your academic excellence that you perform during your tenure, probably you will be recognized. So that is one interesting thing, because I am highlighting all those things because when you go out, you must feel proud of your own institution and what it was and what currently it is being practiced. We are also planning of awarding professors, those who are doing wonderful research, and we have created a new deanery for Dean Digital Infrastructure, which is once again among NIT, this is the first Dean where actually deanery related to digital infrastructure. And we are hopeful that very shortly this campus will be a Wi-Fi campus. Okay, so you'll be very proud of your campus that one day it will be Wi-Fi. I'm sorry, but the main gate, which is one of our ambitious plan, and I'm very confident. I could see that, you know, there are some challenges because even I'm, you know, putting my 100% energy into that. Somehow or other it is getting slower, but I'll see to that as soon as possible this main gate is in place, and before I leave MNIT, I will see to that the gate is completely there. हाँ जी, 30 सालों में 22 सालों में 5 डायरेक्टर आए चले गए, एक गेट एंट्री गेट उसका रिजर्वेशन करके बहुत बड़ा हिमालय पता करने से बराबर। हाँ जी, I will tell you someone, हाँ, actually ये कहा गया because in a very lighter note, please take it lightly, I have been told
that is there is some क्या कहते हैं कि ग्रहण हाँ कुछ ग्रहण लगा है एक्चुअली ये नहीं बन सकता है. सो एक्चुअली आई लाइक टू प्रूव इट रॉन्ग दैट ये बन सकता है. कोशिश तो होना चाहिए. सो प्रॉब्ली आई डू नॉट नो व्हाट इज दैट ग्रहण. एक्चुअली वी नीड टू टेक इट आउट. कभी कभी हो जाता है यू नो. आप मंदिर बनाना चाहते हो नहीं बन पाता. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. नाउ वन इंटरेस्टिंग पार्ट, आई एम very happy to inform you that MNIT Jaipur is really doing very well. Though in some of the discussion it has come that it is within top 50. I will tell you, you know, MNIT Jaipur as an institution, it is the number one among NITs. I am not saying that because I am, you know, heading this institution today, but if I look at the faculty qualities, if I look at the student quality, if I look at the infrastructure, if I look at the weather, if I look at the location, if I look at the people around, it is number one. We need to see to that, even though it is number one in our mind, but on record, why it is not number one. So that is where actually we need to work hard, and alumnus can certainly play an important role. And everyone is talking about the perception the MNIT Jaipur is not doing well. So I think this is not a big challenge. I will tell you what we need to do. Wherever we go, we must talk the best qualities of MNIT instead of talking about the negative qualities of MNIT. Once we start doing it, because there are 10 qualities, okay, probably 8 are excellent and 2 are average. So let us focus on those good qualities instead of talking about average qualities, okay. So once you start doing it, how it can be done? It can come from the true culture. So that culture need to be developed actually always. Don't take it otherwise, Solanki ji. जब आपने कहे ना एक्चुअली देयर वाज ए इम्पोर्टेंट लेक्चर बट ओनली 20 स्टूडेंट, यू हैव टोल्ड समथिंग फैक्ट, बट फॉर स्टूडेंट नो इट इज बिट नेगेटिव. वो दुखी हो जाते हैं. उनको ये कहना है कि आपको भारी मतलब यू शुड हैव जॉइंड इट टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज. ठीक है, तो हम एक कल्चर थोड़ा लेके आएंगे. कंटिन्यूसली विल टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स ओनली. लेट अस कमिट आवरसेल्फ wherever we go outside MNIT, we'll talk positive about MNIT. जो दिल में भी थोड़ा दुख हो लेकिन उसको अंदर से दबा के रखें कुछ साल. ओके, होगा कुछ, कभी कभी हो जाता है ना, हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कॉपरेशन नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एक्सट्रीमली हैप्पी व्हाई माई स्टूडेंट्स आर नॉट हियर, but still I told my boys actually please go back to your hostel, see to that they join, they take advantage of it. क्योंकि after all if they win we win, if they lose we lose actually. So मेरा ये request especially to the alma maters of MNIT Jaipur, please see to that even in your home also, please talk good about MNIT. वो blood में खून पे ले लीजिए कि MNIT is the best institution that I have ever pitched in my life, and that will make you automatically 10-20 years. मैंने कुछ टाइम देखा हूँ सर. Today if you go to institution, I am not naming them, but if you force me I can name it also. If you go to IIT Kanpur alumnus, in my whole life I never heard a single negativity about the alumnus in their whole life. It doesn't mean that they do not have challenges, but that is how the institute grow. तो हम लोग भी क्या करेंगे, हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत कमी हो लेकिन हम उसको पीछे करते हुए हम MNIT जयपुर को टॉप में रखेंगे. Is it okay? So maybe one round of applause for this. Yeah. Now I'm through because we are already running short of time. So to conclude what I wanted to say, MNIT Jaipur from the institution side, we treat alumnus MNITJAA is our family. So I don't see any difference between MNIT and MNITJAA. So we should work together, see to that we together take this institution to the next level. And there are few administration, developments, and I think President, Secretary, everyone, Vice President, and Dean Albanese, they all know that actually I am very positive about it, and we will see to that we'll make this MNITJAA strong to stronger over a period of time. Thank you.
Thank you very much, respected Chairman MNITJAA and Director MNIT Jaipur, Professor N.B. Padi sir. So before concluding, I want to say, as our Director sir was saying, that gate बनाने पे कुछ ग्रहण लगा है. Let's all together work to convert this word grahan to grant. Grant for main gate construction. Our President was noting down all the points while our Chairman was speaking, and I am sure all these points will be handed over to me just after this function so that I can compile today itself before going home, and we all, the Executive Committee members, will work from Monday on all these points. I request all the committee members to be present on Sunday at Alumni Office to discuss with our President boss on all these points. I thank all our local chapters who, on single call from our Central Executive Committee, are celebrating our Foundation Week as per their convenience on a day what they have decided. On 22nd, the first day, we had Bose Se Baat online series, and our Alwar chapter, the very old chapter, has organized a get-together for this. On 23rd, the Udaipur chapter has organized, and we were organizing AI and ML. Today, we have declared the result of contest held yesterday, and we are assembling here on this event. On 27th, 5 of our chapters will celebrate along with us at their local. On 28th, 2 chapters will celebrate. So I am very much thankful to all our local chapters executive committee for organizing our Foundation Day. You all, along with family, are again requested to attend our grand function on 27th August from 6 to 10 p.m. at Khandelwal Girls Institute of Technology, Vaishali Nagar, Jaipur. It will be a felicitation of prominent alumnus with cultural event followed by dinner with family. I again request you all, please attend this function with family. I humbly request again our respected director sir also to please grace the occasion on 27th as our guest of honor with family. Now, on behalf of your own Central Executive Committee, I thank respected Chairman, I thank all our founder members and the senior alumnus, Kalra Bose and Gupta Bose, the first batch seniors, respected Bhatt Bose, and all the dignitaries sitting on the dais, all the dear alumnus, all the dear students who are present over here for celebrating our MNITJAA Foundation Day. Thank you very much. Kindly have a refreshment if not taken earlier. Thank you very much. I'm sorry, I forgot one point. We have a permanent advisory council also, which was included into our constitution first time when we came into this committee, and now it is part of our constitution. It includes all the past presidents and general secretaries, and this committee gives us advices so that executive committee can function properly. Thank you very much.